इसका विमोचन करेंगे। और कई मानव खास है ये ई-कंपेंडियम इसलिए भी क्योंकि इसमें 30 से ज्यादा आलेख हैं जिनका संकलन किया गया है। तमाम विद्वान हैं, ऐसे मनीषी हैं इस अलग अलग क्षेत्रों के पुरोधा हैं जिन्होंने हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ फंडामेंटल राइट्स की बात करी है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी है, किस तरह से हम इसको आत्मसात करके आगे बढ़ सकते हैं ताकि लोकतंत्र का जो भविष्य है उस पर हम चल रहे हैं, जो हमारा मार्ग है वो सदा प्रशस्त है। संविधान इस पर हम माननीय मंत्री का आग्रह करेंगे कि संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2015 से हुई और ये भी एक मोदी जी के चिंतन का एक दर्शन है कि उन्होंने नए नए आयाम निकाले और जैसे मूलभूत अधिकारों की बात होती है और अब मैं माननीय मंत्री से कर्तव्यों की बात भी संविधान ने की है, वो भी लोगों के सामने रखे हैं। ये भी उसमें एक आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत आज प्रणाम। पब्लिकेशन डिवीजन ने ये आज जो कंपेंडियम निकला है, कंपेंडियम वो बहुत महत्वपूर्ण है पीआईबी ने, क्योंकि संविधान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का से लेकर आनंद महेंद्र जी से लेकर संविधान बहुत सारे जो भाव है के जब उन्होंने संविधान को माथा टेका और संविधान के बारे में और उसके आधार पर और ये जब कहा अभी किसी को हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म है राज्य है या कुछ संविधान है तो एक जगह तो उसी में आता है इतने 32 और इसलिए ये जगह मिलेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण का प्रचलन बहुत अभी बढ़ रहा है। ऐसे संविधान हमारे पास ही 26 जनवरी को 5 संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 2015 से हुई, जिन पर भी हम ये करेंगे भेजेंगे जी के चिंतन लोग निश्चित स्वीकार करेंगे। एक और दर्शन है कि ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनी और जैसे मूलभूत अधिकारों की बात होती है उस ड्राफ्टिंग से जैसे मूलभूत कर्तव्यों की बात भी संविधान ने की है, वो भी लोगों के सामने रखा है। ये भी उसमें भारत का है और इसलिए मुझे याद है अनेक ये आज महिलाओं को मताधिकार मिलने में किन्होंने किया बहुत समय लगा, लेकिन अपने देश में पहले दिन से यह अधिकार पीआईबी ने सभी जगह बात हम करते हैं, यानी तो सभी हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी से लेकर आनंद एक ही वोट बहुत सारे वो वोट जजेस के एक ही होगी। लेख ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण और संविधान के बारे में है, ये एक रेफरेंस बुक हो गया और इसलिए अभी किसी को भी संविधान पर कुछ भी पूरे देश की जनता को लिखना है, एक ताकत देने वाला कुछ भी करना है तो एक जगह जो बना और जो वंचित वर्ग है लेख उन वंचित वर्ग एक जगह न्याय देने की विशेष व्यवस्था और ई बुक का प्रचलन बहुत अभी बढ़ रहा है। दलित पीड़ित हमारे पास ही लगभग 5 करोड़ माइनॉरिटी ईमेल आईडीज है, इसमें जिन पर भी हम पुश करेंगे और एक भातृभाव बना रहे, लोग निश्चित स्वीकार करेंगे, एक तत्व बना रहे। इसका विचार संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनी। मुझे इतना ही कहना है इस मौके पर उस ड्राफ्टिंग से कि ये एक बहुत अच्छी पहल पीआईबी और हमारे एक बेमिसाल संविधान सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है, भारत का है और इसके लिए मुझे याद है अनेक देशों में महिलाओं को मताधिकार आज पालन करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे, बहुत समय लगा आज दिन भर, लेकिन अपने देश में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, यह अधिकार मिला। राष्ट्रपति जी ने समानता की बात हम करते हैं, सभी नागरिकों को एक तरह से तो सभी नागरिक एक समान शपथ दिलाई और सभी मंत्रालयों में सभी ऑफिसर्स में सभी कार्यालयों में की कीमत एक ही होगी, शपथ दिलाई गई। ये जो बात आई उसके साथ महत्वपूर्ण है, पहले ऐसा नहीं था, लोगों ने भी और आज बहुत कुछ देखा लिखा पढ़ा देश की जनता को, तो ये सब ताकत देने वाला संविधान जो बना अभी ऑनलाइन और जो वंचित वर्ग थे बच्चे भी ऑनलाइन में वर्गों को न्याय देने की विशेष व्यवस्था आज एक संविधान में की गई है। आई है दलित पीड़ित इसका ये वर्जन ये जो है यही है इसका मूल वर्जन और माइनॉरिटी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें किया है और भी प्रचार प्रसार होता आप बना रहे। मैं लोगों को कहूंगा कि आपको अगर वो बना रहता है तो आपके सारे दोस्तों को किया है ताकि इसका प्रचलन बढ़ेगा। मुझे इतना ही कहना है वो पढ़ेंगे मौके पर
जिनको रुचि है वो संग्रह करेंगे। बहुत अच्छी पहल की है रेफरेंस में और हमारे रखेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अनेक लोग तो संविधान नाम का फोल्डर भी करेंगे और फोल्डर में वो रखेंगे ताकि कभी भी हम वो किताब स्वागत करेंगे, डाउनलोड लोग भी करेंगे। वो भी फ्लिप मोड में दिन भर ये किताब बहुत सारे करता है। तो ये भी एक राष्ट्रपति जी ने है और इसलिए बहुत सभी नागरिकों को एक तरह से केवल किताब और अर्थगर्भ सारगर्भ सभी मंत्रालयों में सभी ऑफिस इसके लिए कार्यालयों में सभी संबंधितों को शपथ दिलाई। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ जय हिंद। लोगों ने भी आज बहुत कुछ देखा, लिखा, पढ़ा, तो ये सब और खासकर अभी ऑनलाइन का जमाना है, बच्चे भी ऑनलाइन में सीख रहे हैं। तो आज एक ऑनलाइन की किताब आई है, इसका ई वर्जन ये जो है यही है इसका मूल वर्जन और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका और भी प्रचार प्रसार होता रहेगा। आप भी मैं लोगों को कहूँगा कि आपको अगर ईमेल मिलता है तो आप आपके सारे दोस्तों को भेजिए ताकि इसका प्रचलन बढ़ेगा। जिनको रुचि है वो पढ़ेंगे, जिनको रुचि है वो संग्रह करेंगे, रेफरेंस में रखेंगे और अनेक लोग तो संविधान नाम का फोल्डर भी करेंगे और फोल्डर में वो रखेंगे ताकि कभी भी वो किताब वो देख सकेंगे डाउनलोड करके। वो भी फ्लिप मोड में ये किताब जैसा आगे बढ़ता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसलिए एक बहुत अच्छा किताब, सुंदर किताब और अर्थगर्भ सारगर्भित किताब दिया है। इसके लिए मैं सभी संबंधितों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी इस बोधन के लिए। और जैसा कि आपने उम्मीद जताई है, हम विश्वास रखते हैं कि ये जो ई-कम्पेंडियम है निश्चित तौर पर अपना जो स्वरूप है उसको बनाए रखेगी और आने वाले वक्त में ये न सिर्फ लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगी बल्कि लोग जो संविधान है उसको भली प्रकार से समझ सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे। तो ये अपने उद्देश्य में जरूर सफल होगी। इस कार्यक्रम में धन्यवाद। वेरी गुड। Significance than ever before in the history of journalism. Press Council of India, being the torchbearer of free and responsible press in India, while adhering to the government norms to contain the spread of COVID-19 this year, is holding the National Press Day program through the webinar. The emphasis this year had to be the role of media during COVID pandemic and its impact on the media. On this occasion of the National Press Day, we are highly honored to have received messages from Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind, gratified as Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, will address this special occasion, privileged to receive the message from Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and Honorable Minister for Environment, Forest, and Climate Change, Information and Broadcasting, and Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Prakash Javadekar ji, will also address on this occasion. On the National Press Day webinar, we have with us the Honorable Chairman, Press Council of India, Mr. Justice Chandramouli Kumar Prasad, and Srimati Anupama Bhatnagar, Secretary, Press Council of India. It is our privilege for having been joined us today by the Honorable Chairman, Bangladesh Press Council, Mr. Justice Mumtaz Uddin Ahmed, participating in the webinar from Bangladesh, and special international guest, Dr. Sule Aker, President, World Association of Press Councils,
Mr. C.K. Naik and Mr. Jaishankar Gupta, members, Press Council of India, and joined by the former members of the Press Council, Shri Ravinder Kumar, Editor, Statesman, and Shri Prakash Dubey, Group Editor, Dainik Bhaskar. Press Council of India welcomes all the panelists today who are present with us. Press Council of India welcomes your esteemed participation on the National Press Day webinar in commemorating the freedom of the press during the COVID pandemic. May I now request Honorable Chairman, Press Council of India, to read the address. May I now also invite Mr. C.K. Naik and Mr. Jaishankar Gupta on the stage, please. May I now request Honorable Chairman, Press Council of India, to read the address of Shri Ram Nath Kovind, Honorable President of India, on the occasion of the National Press Day. राष्ट्रपति भारत गणतंत्र President Republic of India message. I am happy to learn that the Press Council of India is celebrating National Press Day on 16th of November 2020 on the theme Role of Media during COVID-19 and its impact on the media. Rendering its services for nearly 55 years, Press Council of India has been the watchdog safeguarding the independence of the press while trying to ensure quality journalism. Its role is important in the working of our democracy. The theme of this year's National Press Day celebration deals with the most serious crisis facing the world and our country. In dealing with the issues concerning COVID-19, media has played a very important role in educating people, and thereby it has helped in mitigating the impact of the pandemic. Media persons have been among frontline corona warriors. Through PCI, I convey my appreciation to such media persons. I extend my greetings and felicitations to all those associated with the Press Council of India and wish the National Press Day 2020 every success. Ram Nath Kovind, New Delhi, November 6, 2020. We are extremely thankful for the best wishes shared by the Honorable President. Now, on this occasion, may I request Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, to address the media. The Chairman of the Press Council of India, Justice Chandramouli Prasad ji, friends from the print and electronic media, other dignitaries, my dear sisters and brothers, my greetings to all the media friends on the occasion of National Press Day. The press in India has always been in the vanguard of protecting and strengthening the foundations of democracy. A robust, free and vibrant media is as important as an independent judiciary in consolidating democracy and strengthening constitutional rule of law. I must compliment the Press Council of India for choosing the most appropriate topic for addressing all of you through this
webinar, Role of Media during the COVID-19 pandemic and its impact on media. Unmindful of the grave risks associated with a pandemic situation, the print and electronic media journalists have turned into frontline warriors and have been ensuring non-stop coverage of all the happenings that are taking place in the country and abroad. During the course of news gathering, many journalists have unfortunately succumbed to COVID-19 infection, while thousands of others contracted the novel coronavirus. My deepest condolences to the families of the journalists who died of COVID-19 infection. When the country came to a standstill in the wake of lockdown, it was the TV channels which provide the latest updates on the pandemic front. And more importantly, both print and TV channels have played an invaluable role in informing, in educating the masses and creating awareness on the precautions to be taken to combat COVID-19. Conveying the right information at the right time is critical in such a situation. Right information at the right time. Especially when there is a plethora of fake news. People need to guard against unverified, unsubstantiated claims. Media has a huge role in educating the masses in this regard. I would like to convey my deepest appreciation to each and every journalist, cameraman, and others who have been striving constantly to disseminate the news and information. I always say information with confirmation is more than ammunition. So the information has to be with confirmation. The media industry also is facing hardships. Social distancing norms has led to cancellation of live events nationwide that badly hit sectors like travel and hospitality. The media industry too was adversely affected. As a result, some newspapers have curtailed the number of their editions and preferred to go digital. There have been unfortunate instances of employees being laid off in both print and electronic media. Salaries have been reduced in some cases. We have to use and utilize our collective strength to address this challenge. Journalists should not be left high and dry in these difficult times. I appeal to all stakeholders to come together and find innovative solutions to the extraordinary situation created by the coronavirus. The government, the media management, the journalists and other well-wishers, they must come out with new ideas. The pandemic has caused changes in consumer behavior. More and more people are shifting to digital platforms, leading to fall in newspaper subscription. There is some fear, unnecessary fear, unfounded fear. Created if you touch the newspaper, you will get the infection, which is not correct. Later people started realizing. I understand that the newspaper industry is responding to this change by producing more digital content. But regional papers that did not have a significant digital presence are the worst hit, and they require hand-holding in this transition towards online platform. हमारे देश में भारतीय भाषाओं में, जिसको आप लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं में, अखबार पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी काफी है. इसलिए इस विषय के ऊपर भी हम लोग ध्यान देना चाहिए. This pandemic, my dear sisters and brothers, has underscored the need for adopting flexible and resilient business models by media organizations. Where the media industry is severely impacted, the government has to take the needed steps. This crisis has opened up several opportunities also. More and more people are staying at home and are increasingly relying on the media and the entertainment industry for the latest information and to fight the isolation caused by the lack of social interactions. I read 18 newspapers a day, including newspapers of my mother tongue, Indian language, Hindi,
and also English. The huge popularity of the re-telecast of Ramayana and Mahabharata serial is a clear example. The media industry should tap into this increased audience base and explore alternative ways to improve its financial health. I had time during this period to read in-depth the newspapers, some of the articles, very informative, outstanding, really, very knowledgeable, and lot of articles appeared in various national print media. They are really become hub of information to enlighten all of us. Some of them media has focused more on this pandemic. They gave a lot of information. What is happening across the globe? What are the solutions that are being offered? What are the success stories? What are the positive sides? Of course, some sensationalism also is added by some people, which is not advisable. Otherwise, really very good articles have appeared, not only about the COVID pandemic, about the economy, about the civilization values, about cultural ethos, and also along with that, of course, information about public, about the government, about various happenings in the country. I always say, my dear friends, that journalism is not a mere profession, but a pious mission. It's a mission. It should never be used for commission. Nobody should give remission or do any omission. We must all have passion. Press has always played an outstanding role in empowering the people and furthering national interest. Democracy cannot survive without a free and fearless press. Therefore, any attack on the freedom of the press is detrimental to national interest and should be opposed by one and all. On its part, media also needs to be fair, objective, and accurate in its reporting. Sensationalism should be avoided, and the tendency to mix news with views needs to be curbed. This is increasingly seen in certain sections. There should be greater space for development news in our reporting. Development, knowledge acquisition. There is a hunger and thirst for development. So there should be proper space provided for the developmental side. In the end, I once again congratulate all friends from the media for serving the nation with dedication and commitment. And I also would like to compliment the Press Council of India for taking this initiative and conducting this program. And they have chosen a most appropriate topic: the role of media during the COVID-19 pandemic and its impact on media. This is a very relevant topic. I wish you all the best. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. We express our deep gratitude to the Honorable Vice President for sharing his thoughts on this Press Day. May I now request the Chairman, Press Council of India, to read Honorable Prime Minister of India's address on the National Press Day. श्याम जी, Pradhan Mantri, Prime Minister message. It is heartening to learn that the Press Council of India is celebrating the National Press Day on November 16, 2020. The webinar being held on the theme Role of Media during the COVID-19 pandemic and its impact on media, with participants from several other countries, also reflects the enabling power of technology.
From creating mass awareness about important issues to contributing to a behavioral change in the society for larger good, we have seen how the media, as a valued stakeholder, has furthered the efforts of the government and helped many initiatives like Swachh Bharat and water conservation grow into mass movements in the last few years. Be it positive criticism or highlighting success story, the media has been continuously adding strength to our democratic ethos. When the world is up against an unprecedented crisis in the form of COVID-19, the nation's fight against the pandemic is powered by the restraint and resolve of its 130 crore citizens. In such a scenario, the media has been continuously doing exceptional service by spreading awareness against the COVID pandemic. In a post-COVID world, India is marching ahead with its resolve to build a strong and Atmanirbhar Bharat. Media is giving our resolve the shape of a big campaign and carrying forward the message of vocal for local. Today, the world is rapidly changing, and there is a need more than ever to harness our entrepreneurial energy, intent, and talent to expand this vision across all sectors. With digital technology showing way, Indian media endeavor towards ensuring a stronger presence globally will strengthen our vibrant media landscape. The webinar will provide the participants a platform to share their experiences with each other and with the larger audience. It will also present an opportunity to chart out a roadmap for future needs. Best wishes for all-round success of the celebration. Narendra Modi, New Delhi, Kartik 20, Sak Sambat 1942, 11 November 2020. Thank you, Chairman, sir. Needless to say, it is a privilege to have the thoughts of Honorable Prime Minister on media on this special occasion. May I now request for the address of Honorable Minister Shri Prakash Javadekar ji. प्रेस दिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी भाई और बहनों, प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल के सदस्य, अन्य संपादक और सभी मित्रों, प्रेस की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है और ये मेरे मन पे बहुत गहराई से लिखा गया है, क्योंकि मैं 25 जून 1975 को कभी भूल नहीं सकता। आजादी के 27 साल बाद इस तरह का मौका आया कि जब आपात स्थिति घोषित हुई, पुलिस सीधे प्रेस के दफ्तर में आई और सारे एडिटोरियल स्टाफ की मीटिंग लेके उन्होंने कहा, आप जो भी न्यूज तैयार करोगे हम देखेंगे, अगर मंजूर करेंगे तो न्यूज जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ये सेंसरशिप का रूप था। आज तो कोई बाहर से भी बताएगा तो प्रेस चिल्लाएगा कि कितना दबाव आ रहा है। तो इसलिए प्रेस की आजादी महत्वपूर्ण है और ये मेरे मन पे, और इसी के विरोध में, सेंसरशिप के विरोध में सत्याग्रह करते हुए हम उस समय कॉलेज में थे, कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर आए थे, काम कर रहे थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, सत्याग्रह किया और फिर 16 महीने जेल में रहे। लेकिन प्रेस की आजादी अनिर्बंध नहीं होती। ये जिम्मेवार
आजादी है, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और कोई भी आजादी ये उसके अंगभूत बंधनों के साथ आती है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है, सेंसेशनलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अपनी बात रखने की आजादी। लेकिन बात किसी स्वार्थ के चलते, किसी को जानबूझ के बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसका विरोध हो सकता है, जिन तत्वों का पुरस्कार करते हैं उसका विरोध हो सकता है, जिस तरह से काम लोग कर रहे हैं उसका विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत गरिमा संपादक की है, पत्रकार की है, तो आम आदमी की भी है। अभी फिलहाल देश में प्रेस की आजादी का फिर से चर्चा हो रही है और मैं भी इसमें जोड़ता हूं कि मैंने पहले ही दिन ट्वीट किया कि जिस तरह से प्रेस की आजादी पर हमले हो रहे हैं वो अच्छा नहीं है। लेकिन दो विषय आज मैं जरूर रखूंगा। ये टीआरपी का क्या मामला है? इश्तिहार देने वाले इश्तिहार देंगे, उनको एक गाइड चाहिए कि कहां इश्तिहार देने से ज्यादा फायदा होगा, किस समय देना चाहिए, कौन से कार्यक्रम में देना चाहिए, किस चैनल को देना चाहिए। यह एडवर्टाइजर का दृष्टि है और ब्रॉडकास्टर्स है जिनके यहां उनको इश्तिहार देना है। तो ये दोनों ने आकर एक टीआरपी की सिस्टम बनाई, मार्ग स्थापन किया। हमने जानबूझकर, सरकार ने इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि भाई इश्तिहार देने वाला और इश्तिहार लेने वाला, ब्रॉडकास्ट करने वाला, इन दोनों के अगर एक राय है तो हम काय के लिए बीच में आएंगे। लेकिन अब बारी आई कि हमें दखल देनी पड़ रही है। हमने एक कमेटी नियुक्त की है। मेरा तो मानना है कि टीआरपी के आज 50,000 मीटर थे, पहले तो टाइम के जमाने में 5,000 मीटर होते थे, इसलिए मैनिपुलेशन होगा। अगर 1 करोड़ लोगों का पसंदी देखने की सिस्टम टीआरपी में आती है तो फिर क्या मैनिपुलेशन होगा? तो मैनिपुलेशन की संभावना कैसे खत्म की जा सकती है, इसके लिए हमने कमेटी नियुक्त की है और बहुत देरी नहीं लगाएगी, जल्दी रिपोर्ट आएगी। क्या पॉसिबल है? दूसरा मुद्दा है प्रेस काउंसिल। मैं भी सदस्य था सांसद के नाते। एक तरह से वो भी एक सेल्फ रेगुलेशन का अलग अवतार है। कानून है, सरकार नियुक्त अध्यक्ष है, लेकिन बाकी संपादकों के प्रतिनिधि, मालिकों के प्रतिनिधि, पत्रकारों के प्रतिनिधि, फोटोग्राफर के भी प्रतिनिधि, संसद के प्रतिनिधि, सभी प्रकार के लोग प्रेस काउंसिल में बैठते हैं। लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि प्रेस काउंसिल को थोड़ी अधिक ताकत देनी चाहिए। इस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन टीवी चैनल्स के लिए तो प्रेस काउंसिल जैसी व्यवस्था नहीं है, तो वहां सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज एक संस्था बनी है जिसके जस्टिस सिकरी साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं। कोई भी शिकायत कर सकता है, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको वो दंडित भी करते हैं, चैनल को माफी मांगने को लगाते हैं, हम बीच बीच में देखते हैं।
लेकिन बहुत चैनल्स है कि जो इसके सदस्य ही नहीं है, तो उनको तो कोई बंधन नहीं, ऐसी तो व्यवस्था नहीं रख सकते। तो लोग हमें सुझाव दे रहे हैं कि आप भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बनाइए कि सभी चैनल के लिए वो कॉमन रहेगा। हमने अभी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन विचार जरूर कर रहे हैं। और तीसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ना वहां प्रेस काउंसिल जैसी व्यवस्था है, ना वहां सेल्फ रेगुलेशन है। वहां बहुत अच्छे फिल्में भी होती है, साधारण भी होती है, बुरी भी होती है और बहुत बुरी भी होती है। इसलिए वहां भी क्या किया जा सकता है, इसके लोग सुझाव दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। रोज सैकड़ों पत्र आते हैं और हम सबका विचार करते हैं। तो इन चैलेंजेस, ये चुनौतियां है, मेरा मानना है प्रेस के लोग ही स्वयं इसमें अगुवाई करके एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चैलेंज को स्वीकार करें। सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती, सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी है। जब सरकार आप पर विश्वास रख रही है तो आप भी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का, एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का उदाहरण पेश करें। और यही हमारी चुनौती है, यही हमारे लिए इस साल का काम है। Press Council of India expresses its gratitude for having the thoughts and information shared by the Honorable Minister. May I now request for the address of Mr. Prakash Dubey, former member, Press Council of India and Group Editor, Dainik Bhaskar, for sharing his thoughts on this day. कोविड-19 महामारी के दौरान संवाद माध्यमों की भूमिका। महामारी और युद्ध दोनों नकारात्मक स्थितियों में जनधन और संसाधनों की अपार हानि होती है। जांच पड़ताल में किसी देश या किसी भगवान के दोषी साबित होने तक कोरोना कोविड-19 महामारी प्राकृतिक आपदा है। आपदा की नकारात्मक परिस्थिति में संवाद माध्यम जटिल और अति संवेदनशील चुनौतियों से जूझते हैं। पत्रकार की सहज पहचान देश, संवाद संस्था और समुदाय से बनती है। व्यापक सामाजिक हित में हर कदम पर कलम और कंप्यूटर के एक एक शब्द को पूरी निष्पक्षता से तथ्य पेश करने की चुनौती पर उसे खराब करना भी उतना ही जरूरी है। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर के पत्रकार कसौटी पर कसे गए। पहला प्रताप सरकारों, शोधकर्ताओं और संक्रमण से मुक्ति दिलाने में जुटे संगठनों के प्रयास से पाठक को अवगत करा। इसके साथ ही औषधि की आपूर्ति, उपचार के अभाव में काल के गाल में समाते लोगों, भूखमरी और बेरोजगारी से जूझते पलायन करने वालों की कारुणिक गाथाओं के साथ न्याय करने की अग्नि परीक्षा। वर्ष 2019 के अंत में केरल राज्य में कोरोना के पहले मरीज की पहचान हुई थी। समाज माध्यम शक्तिशाली देश के अतिथि के आगमन के जश्न की जगमगाहट का शब्द चित्र खींचने, पढ़ाने और दिखाने में जुटे हुए थे। 22 मार्च को अकस्मात सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का नया प्रयोग हुआ। शांति व्यवस्था के लिए लगने वाले कर्फ्यू का सामना सबने किया था। जनता के नाम पर लगने वाला बस एक ही कर्फ्यू पत्रकारों ने जाना था, भ्रष्ट सत्ता के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण का अहिंसक संपूर्ण क्रांति आंदोलन।
जनता कर्फ्यू का सबने स्वेच्छा से पालन किया। पुलिस वाले भूखे रहकर मुस्तैद रहे। जनता कर्फ्यू से पहले से ही आवागमन थम गया था। गांव देहात का हाल समझने पहुंचे पत्रकारों ने ट्रक के नीचे स्टोव पर चावल पकाकर पेट भरते ड्राइवर देखे। उनकी वेदना सचित्र छपी। जन समर्थन से संतुष्ट शासन ने तब तक लॉकडाउन लागू कर दिया। परिस्थिति विकट हो गई। संवाद माध्यमों ने पूरी निष्ठा के साथ इन कार्यक्रमों का प्रचार किया। ताली बजाने, थाली बजाने, दिया जलाने बुझाने तक। कल कारखाने और यातायात ठप हो गए। निर्माण कार्य बंद होने से बिल्डर ठेकेदारों ने बाहर से आए मजदूरों को निर्माणाधीन इमारतों में शरण नहीं दी। दलील दी, खुले परिसर में रहोगे तो प्रशासन हमें सताएगा। जान पर खेलकर खबरें जुटाने वाले पत्रकारों पर नया कहर बरसा। अखबारी कागज छूने से संक्रमण होने की अफवाह का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खंडन किया। प्रधानमंत्री ने समाज माध्यमों को अत्यावश्यक सेवा बताया। इसके बावजूद सोशल मीडिया सहित संप्रेषण माध्यमों पर यह अफवाह सवार होकर घर घर पहुंची। महामारी की जानकारी जुटाना मौत से आंख मिचौनी खेलना था। समाज माध्यम चुनौतियों से जूझते रहे। घरों में, कॉलोनियों से लेकर कस्बों और देहातों में अखबार भेजने पर रोक लगी। आवासीय सोसाइटी से लेकर कलेक्टर या सक्षम अधिकारी के आदेश से। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने 18 अप्रैल को परिपत्र जारी कर सशर्त छूट दी। 20 अप्रैल से अखबार छाप सकते हो, लेकिन हाथर अखबार बांट नहीं सकता। प्रश्न है, अब तक छपे अखबार के गैरकानूनी रहे? चौराहों पर खोमचे लगाकर अखबार बेचे जाए या लोग अखबार के दफ्तर पहुंचकर अपनी प्रति वहां से लें? लॉकडाउन के कारण तो यह संभव नहीं है। घर से निकलने की मनाही है। भारतीय प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष ने शिकायत मिलते ही राज्य सरकार से तुरंत जवाब मांगा। मुख्य सचिव ने आदेश में आंशिक बदलाव कर सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए सशर्त अनुमति दी। अदालत का इंतजार किए बगैर फुर्ती से समाधान करने के लिए परिषद और अध्यक्ष का आभार। बहरहाल प्रशासन और महामारी के प्रचारित भय के कारण अखबारों का पूर्ववत बंटना शुरू नहीं हुआ। सही सूचना देने वाले अखबारों का घर में प्रवेश वर्जित था। उधर रामायण, महाभारत आदि धारावाहिक मुफ्त मनोरंजन कर रहे थे। इससे पहला नुकसान, व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र को अपराधी ठहराने के लिए अफवाहबाजों को खुली छूट मिली। दूसरा नुकसान, किसानों, मोची, नाई आदि रोज कमाकर कुटुंब पालने वालों, पलायन करने वाले मजदूरों की तकलीफ अखबारों के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाने में बाधा है। अब इसके बाद एक और नया संकट, अखबारों ने अपने संस्करण बंद कर दिए। पत्रकार, गैर पत्रकार कर्मचारियों की छटनी हुई। दूर दराज क्षेत्र में कार्यरत अंशकालीन संवाददाताओं से कहा गया, अब अखबार ही नहीं पहुंचता, आपकी जरूरत नहीं है। और एक कष्ट, महामारी के दौरान राज्यों की सरकारें बदली, विधानसभा चुनाव हुए, आवागमन सामान्य नहीं हुआ। चप्पल जूते खरीदने में अक्षम लोगों को बच्चों की डिजिटल पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए। सरकार ने किस्मत में कितनी और किससे सहायता पहुंचाई, वह सही पात्र तक पहुंची या नहीं पहुंची, आज भी सही पड़ताल करने में बाधाएं बरकरार है। वह पत्रकार शार्ली हेब्दो, इसके दफ्तर पर हमले के बाद फ्रांस में हाल में शिक्षक महिला का गला काटा गया। नागरिक स्वतंत्रता को फ्रांसीसी धर्म से अधिक महत्व देते हैं, जीवन रस मानते हैं। भारत की स्थिति अलग है। तबलीगी जमात पर महामारी की साजिश रचने का आरोप देश भर में लगातार सुर्खियां पाता। कुछ बस्तियां मवेशी बंदी गृह जैसी यानी कि कांदी हाउस बनी। किसी राज्य की पुलिस या खुफिया एजेंसी ने किसी समुदाय या वर्ग की साजिश का पुख्ता प्रमाण नहीं दिया। भारत की तासीर और विरासत का कमाल देखिए। महामारी के दौरान ही अदालतों ने इन समुदायों को बेगुनाह बताकर स्वदेश जाने की अनुमति दी।
फ्रांस की तरह न अव्यवस्था फैली और न हिंसा फैलाने की इक्का दुक्का शरारतें कामयाब हुई। मेरी राय में दोषारोपण अभियान सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। समाज माध्यमों से गलतियां हुई। महामारी की अनदेखी कर एक वर्ग मुंबई के फिल्म कलाकार की मौत पर कपोल कल्पना करने और समांतर अदालत लगाने में जुटा हुआ था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर एक टीवी चैनल के संपादक को जेल से मुक्ति दिलाई। लिखने या बोलने के कारण संपादक जेल नहीं भेजे गए। इसके विपरीत महामारी से बचाव के तरीकों और अमल में गड़बड़ी उजागर करने वाले पत्रकार कई राज्यों में पुलिस और प्रशासन के कोप के शिकार हुए, अब तक प्रताड़ित है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को महामारी के दौरान प्रताड़ित पत्रकारों की सूची भेजी और उनसे कहा है कि इन पर गौर करिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में औसतन एक बड़ी कामयाबी पाई है कि हर तीसरा नागरिक अखबार का पाठक है। पत्रकारिता के स्वतंत्रता के मामले में भारत बहुत पीछे। दुनिया भर में प्रेस की आजादी पर नजर रखने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में भारत 142वें पायदान पर पहुंचा। पिछले वर्ष 140वें पायदान पर था। महामारी के दौरान घटनाओं का पूरा मिलने पर और नीचे खिसकने का अंदेशा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने 5 देशों में अखबारी स्वतंत्रता पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत बताई है। भारत इसमें शामिल है। महामारी के दौरान भारत को नीचे गिरकर यमन और सोमालिया की बराबरी पर पहुंचाना मुझे लज्जाजनक लगता है। मेरे कुछ सुझाव है। पहला सुझाव, महामारी के दौरान अखबारों के प्रकाशन, वितरण, प्रसार आदि पर रोक लगाने या बाधा पहुंचाने में प्रशासन और अफवाह वालों की भूमिका की भारतीय प्रेस परिषद जांच करा। दूसरा, कोविड-19 महामारी के संदर्भ में कुछ समुदायों पर आक्षेप लगाने वाले एक तरफा समाचारों के पीछे सक्रिय शक्तियों का पता लगाया जाए। परिषद की आचार संहिता का घोर उल्लंघन हुआ है। बदनाम संवाद माध्यम हुए। वर्ष 2017 में भारतीय प्रेस परिषद के स्वर्ण जयंती महोत्सव को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री ने समाचार पत्रों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए प्रेस काउंसिल को ही एकमात्र उपयुक्त मंच बताया था। उनकी नेक सलाह पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और अभी हाल में 15 नवंबर को जो एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जो हत्याएं हुई हैं पत्रकारों की दक्षिण एशिया में, दुर्भाग्य है कि उनमें भारत शामिल है और भारत के 4 लोगों के नाम बताए हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति से निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि संवाद माध्यम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अन्य संस्थाओं को अपनी भूमिका पर गौर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your insights today. May I now invite Sri Ravindra Kumar, former member, Press Council of India, and editor-statesman, to share his insights on the topic for this National Press Day.
Not getting a sound. Getting a audio. Due to some technical issues, we will move on to the next speaker. May I now request Mr. Jaishankar Gupta, Member Press Council of India, to address the viewers on this press day. धन्यवाद। नेशनल प्रेस डे पे आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हमें खुशी है हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन सब ने हमारा मार्गदर्शन किया। आज का हमारा जो नेशनल प्रेस डे है, एक ऐसे माहौल में मनाया जा रहा है जिसकी हम सभी ने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा समय भी आएगा जब हमारे मुंह पे पट्टी बंधी होगी और हम प्रेस फ्रीडम की बात करेंगे। ये पूरी दुनिया में है एक ऐसी महामारी जो कब किसके दरवाजे पे मौत बनके आ जाएगी या कोई दावे के साथ नहीं बता सकता है। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े लोग इस महामारी की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं। हमने देखा कि आज का ही जो आंकड़ा है, दुनिया भर में 5,46,00,000 लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए। 13,22,171 लोगों की जान इस महामारी ने ले ली। अमेरिका में अकेले 1,12,00,000 लोग 1,12,37,000 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। भारत में भी हमारे 88,46,000 लोग चपेट में आए। इनमें से 1,30,000 लोग असमय मौत के शिकार बन गए। दिल्ली में भी लगातार इधर हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि रोज कभी 7,000 कभी 8,000 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। यह बहुत ही संकट का काल है और संकट सिर्फ समाज के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए ही नहीं है, पत्रकारिता के लिए भी है। जो हमारा आज का विषय है, हम तो प्रेस काउंसिल के लोगों को बहुत बधाई देंगे, धन्यवाद करेंगे कि ऐसे माहौल में भी इस नेशनल मीडिया सेंटर में इस तरह का आयोजन किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स थे उनका पालन करते हुए ये आयोजन किया गया और विषय रखा गया कोविड-19 एंड मीडिया की भूमिका। देखिए, कोविड-19 या कोरोना कुछ खास लोगों को पहचान करके उनके पास नहीं जाता है। ये सबके लिए एक समान एक निगाह से देखता है। इसमें सबसे अधिक शिकार जो लोग हुए हैं ये हमारी पत्रकार बिरादरी के लोग। हालांकि हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद सरकार ने अभी तक पत्रकारों को, चाहे वो टीवी चैनल्स के पत्रकार हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हों, इनको कोरोना वॉरियर्स नहीं घोषित किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी तो थोड़ा माहौल बदला हुआ है, लेकिन एक ऐसे समय में जब इतना भयानक रूप ले रही थी ये महामारी,
कहीं कहीं निकलना दुभर हो जाता था, लोग अपने अपने घरों में बंद रहते थे। उस समय भी पत्रकार कलम, कैमरे और कंप्यूटर के जरिए मैदान में होते थे, भीड़ में जाते थे, लोगों की गलियों में जाते थे, देखते थे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रही है, कितने लोग संक्रमित हो गए, कितने पत्रकारों की जान चली गई। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन इस दुर्भाग्य के बारे में कभी सोचता कोई नहीं है कि हम दूसरों के बारे में लिखते हैं, हमारे बारे में कोई सोचता भी नहीं। हमारे एक पत्रकार ने एम्स में 6ठी मंजिल से छलांग लगा करके जान दे दी। वो कोरोना पॉजिटिव था, उसका इलाज हो रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। हमारे एक पत्रकार जो पीटीआई के अमृत मोहन हैं, यहीं पहले दिल्ली में थे, बाद में लखनऊ में चले गए थे, कोविड पॉजिटिव हो गए, समय पे इलाज नहीं मिला, समय पे उनको अस्पताल नहीं मिला, पहुंचाया नहीं जा सका, उस नौजवान ने अपनी जान दे दी, दम तोड़ दिया। ऐसे तमाम किस्से, ऐसे तमाम कहानियां छिटपुट कहीं कहीं आती रही, कहीं सोशल मीडिया के जरिए, कहीं मीडिया के किसी और कोने में, लेकिन कभी वो खबर नहीं बनी, बड़ी खबर नहीं बनी, कभी वो चर्चा का विषय भी नहीं बनी। किसी टीवी चैनल पे कभी आपने नहीं देखा होगा कि कितने पत्रकारों की जान गई है, कितने लोगों ने इसमें लड़ाई में योगदान किया है। एक तो ये पहलू है। दूसरा एक मीडिया का और पहलू है, अखबार सिमटते गए, कई कई चैनल बंद हो गए। आप देखते थे जो अखबार 40-40 पन्नों के छपते थे, अभी वो 16 पन्ने में 12 पन्ने के अखबार बन के रह गए, विज्ञापन नहीं है। शुरू में जैसा अभी हमारे मित्र प्रकाश दुबे जी बता रहे थे कि अखबार छापने की अनुमति मिल गई, अखबार बांटने की अनुमति नहीं मिली। इस तरह से जो माहौल बना, इसके नतीजे के तौर पे जो हमारे संचालक हैं, मीडिया के जो प्रबंधक हैं, संचालक हैं, मालिक हैं, उनके मुनाफे में कुछ कमी आई, जाहिर सी बात है। लेकिन उस मुनाफे की कमी का सबसे बड़ा दबाव मीडिया कर्मियों पर पड़ा। कितने संस्थानों में वेतन बकाये हो गए, कितने संस्थानों में, बड़े से बड़े संस्थानों में भी वेतन में कटौती की गई, कितने संस्थानों के संस्करण बंद हो गए, नौकरियां चली गई, और जो चल रहे हैं बड़े बड़े अखबार हैं चल रहे हैं, उनमें भी लोगों की छटनी कर दी गई, बड़े पैमाने पे कर दी गई। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे चेयरमैन चंद्रमौली के प्रसाद जी के नेतृत्व में प्रेस काउंसिल ने इस मामले में भी इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया, नोटिस जारी की। लेकिन ये रियलिटी है, आज की ये रियलिटी बन के खड़ी है। बहुत अच्छा लगा जब प्रकाश जावड़ेकर जी बता रहे थे कि इमरजेंसी में सेंसरशिप लागू हो गई थी, वो जेल गए थे। जेल तो हम भी गए थे इमरजेंसी में, हमने भी इमरजेंसी को देखा था, बड़े करीब से देखा था। लेकिन आज जैसा अभी प्रकाश दुबे के तकरीर में आपने देखा होगा, उन्होंने कुछ केसेज के जिक्र किए। एक मामूली ट्वीट करने के नाम पे प्रशांत आर्या नाम का पत्रकार गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाथरस में इतना बड़ा कांड होता है, उसकी रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार जाते हैं, केरल के पत्रकार जाते हैं, उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यूएपीए जैसे निकृष्ट कानून, कठोरतम कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन सी प्रेस फ्रीडम है? ये किस प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ हम लड़े और किस प्रेस फ्रीडम्स का हम ये कर रहे हैं? और आपकी तकरीर में भी बार बार सेल्फ रेस्पॉन्सिबल मीडिया, प्रेस फ्रीडम का एक हद तक ठीक है, हमको संविधान के सेक्शन 19 में प्रेस फ्रीडम या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, लेकिन उसके अगले पार्ट में उस पर कुछ बंदिशें भी हैं, उस पर कुछ गाइडलाइंस भी हैं। तो हर पत्रकार उसका पालन करेगा, नहीं करेगा तो कानून बने हुए हैं, कानून देखेगा उस काम को, प्रेस काउंसिल देखेगी उस काम को। प्रेस काउंसिल को और अधिक अधिकार संपन्न करने की बात का हम समर्थन करते हैं, हम उसकी मांग भी करते रहे हैं, हम लोग उसकी वकालत भी करते रहे हैं। प्रेस काउंसिल को जैसे बाहर की दुनिया में जो लोग नहीं जानते ठीक से, वो कहते हैं कि वो टीथलेस बॉडी है। ऐसा नहीं है कि टीथलेस बॉडी है, टीथ है हमारे पास भी, लेकिन हम बहुत ज्यादा काटते नहीं हैं, हम समझाते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है जो सेंसरशिप या उस तरह के जमाने का या
घोषित हो या अघोषित आपातकाल की याद दिलाने वाला काम हमारा नहीं है। हम वॉचडॉग हैं, हम उसकी भूमिका को निभाते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात यही है। आज देखिए, मतलब किसी भी चैनल में चले जाइए, किसी भी अखबार के पास चले जाइए, जो न्यूज पे खर्च करने वाला, जो कंटेंट जमा करने का जो है रिसोर्स जमा के लिए, उसमें सबसे कम खर्च हो रहा है। कोई खर्च ही नहीं हो रहा। पहले होता था, हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो अखबारों के, पत्रिकाओं के, उस समय तो चैनल होते नहीं थे बहुत ज्यादा, दूरदर्शन के अलावा कोई था भी नहीं उस समय तो, लेकिन हर राज्यों की राजधानियों में, हर बड़े शहरों में संवाददाता होते थे, रिटेनर्स होते थे, स्ट्रिंगर्स होते थे। आज तो कुछ भी नहीं है। आज बड़ी से बड़ी घटना बगल में हो जाती है तो एक जिले का जो छोटा सा कोई स्ट्रिंगर होगा, वो अगर कोई वीडियो भेज दिया, कोई ऑडियो भेज दिया, उस पर हमारे वीडियो चैनल, टीवी चैनल वाले खबर बना लेते हैं। अपना कोई आदमी भेज नहीं पाते हैं, भेजते नहीं है, करते नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि जो पत्रकारों की जो सुविधाएं भी रही हैं, जैसे पत्रकारों को जाने के लिए, मौके पर रिपोर्ट करने के लिए, खासतौर से जो भारत सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनके लिए रेलवे ने प्रेस कूपन, प्रेस कंसेशन दिया हुआ था। कोरोना के नाम पे उसको भी वापस ले लिया गया। अब रेलगाड़ियां तो खूब चलने लग गई, सब कुछ चलने लगा, सारा कुछ हो गया, लेकिन सीनियर सिटीजन्स की और पत्रकारों की को जो छूट मिलती थी, वो छूट वापस ले ली गई। अभी तक उसको रिस्टेट नहीं किया गया। दूसरी बात है कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारी सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हम नौकरी कर रहे हैं, कब हमको हमारे मैनेजमेंट के लोग नोटिस थमा देंगे या फोन कर देंगे, कल से मत आइएगा। हमारी देखरेख करने वाला कोई ना कोई कानून बना है, ना कोई उस तरह की व्यवस्था है। पेंशन नाम की कोई चीज नहीं, अभी तक पेंशन की कोई व्यवस्था हुई नहीं। बार बार हम लोग कहते गए कि भाई पत्रकारों को पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार बहुतों के बारे में बहुत बारी सोचती है, तो अगर उसकी निगाह पत्रकारों पर भी जाए, नेशनल प्रेस डे पर अपने उद्बोधन में या अपने संदेश के समय भी उनको अगर ये बात याद आ जाए कि पत्रकार भी एक समाज का ही प्राणी है, जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए जागता है, समाज के लिए लिखता है, पढ़ता है, उसके भी सामाजिक सिक्योरिटी के बारे में, सामाजिक सुरक्षा के बारे में कुछ इंतजाम होने चाहिए, पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए भी हमको लगता है कि कभी सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि हम सबकी खबर लेते हैं, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेशनल प्रेस डे पे अपने और साथियों का, वर्ल्ड प्रेस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं हमारे सुले एकर साहब, बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद मुमताजुद्दीन साहब हैं, इन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे सब विदा लेते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. I now request Mr. C.K. Nayak, Member, Press Council of India, to address on this National Press Day. Honorable Chairman, Press Council of India, Mr. Justice C.K. Prasad, Chairman of Bangladesh Press Council, President of World Association of Press Councils, Dr. Sule Akar, distinguished members of PCI, and honored guests. On this topic, role of media during COVID-19 and the impact of the pandemic on media. See, mankind has seen several pandemics, starting from smallpox to plague to Spanish flu, and now the more dreadful COVID-19. But this COVID-19 pandemic has no parallel by any parameter, be it number of victims or geographical spread or severity with which it strikes, for which it is given the name pandemic of the century. Its impact was all pervasive, and so also on the media. Impact of this pandemic on media has also increased manifold for the simple reason that the media itself has increased not only in size but also variety and coverage. To begin with, the pandemic has struck the backbone of the media, which is its financial stability. With the world economy severely hit, its impact on ultimate revenue for the media has become the first casualty. Many newspapers, TV channels, online media, and other forms of media were forced to shut operations. Those who could survive pruned their content through publications, telecast time or broadcast time.
At the end, this has hit the journalists in many ways. The affected media has no boundary. From Kashmir to Kanyakumari, media houses have folded down or reduced operations. The impact included all, be it in print, TV, or digital media. Many newspapers, starting from the ones claimed to be largest circulate in the world, to teeming vernacular ones, all have been affected. The cascading consequence on the media professionals again, irrespective of any criteria, print or electronics, big or small, from metropole to small towns. Some have lost their jobs, many have faced pay cuts, and some even work without pay, let alone talking about any ancillary benefits. There is no count of heads rolled down or persons affected. As our chairman says, there is no census of journalists in our country. So to get the exact figure, there is no figure how many journalists have lost job and how many have been affected. It is an irony that, like the dreaded DG, the pandemic has not spared anybody, high or low, poor or rich. Journalists of all media, irrespective of the rank, have lost their jobs. It is not surprising that in many cases, scribes have become victims themselves because of their exposure to the patients and health professionals all on line of duty. One COVID-19 affected journalist even committed suicide at AIMS in the national capital while being under treatment, as our President Jaswant Gupta said. Rules were thrown to the wind. Serious issues like dismissal from jobs, which normally require prior written notice, were done on WhatsApp. Working journalist Act 1955 was suspended along with other labor laws in a neighboring state of Delhi during this pandemic. This had an amplified impact since most of the publications TV studios are in this national capital region only. Media houses, through their associates, appealed to the government for removal of customs duty on newsprint, 2-year tax holiday, 50% increase in the rate of advertisements from Bureau of Outreach Communications, formerly known as DAVP, and more expenditure on this sector, so the media industry can survive. Some newspapers and periodicals created paywalls on the line content, which used to be free earlier. All these different appeals were made to revive the media industry and help the media personnel to survive. It is a paradox that the same media houses did not hesitate to sack their own employees, many of them working for years. It is an irony that even journalist unions and associations who had supported the demand of the media house for increased advertising support and tax benefits to the industry. The matter went up to the Supreme Court and the case is still pending. All this happened despite the fact that government's stern warning not to sack any employee during the COVID-19 crisis. Associations and unions of journalists made several appeals to the government at the highest level to stop such arbitrary actions like dismissal and any pay cut, but all in vain. Press Council of India was flooded with complaints on such dismissals and pay cuts itself. PCI itself also took suo motu notices on many such cases. Journalist bodies like the Press Association have made appeals to the government at the level of Prime Minister for intervention. Press Council of India too asked the media houses and the government to come to the aid of the journalists at this hour of crisis. Some help was forthcoming, but considering the magnitude of the damage, COVID-19 in the media, it was a drop in the ocean. As far as the role of the media during the pandemic is concerned, it was probably the most difficult period in its recent history. The journalists must collect and disseminate the news right from the horse's mouth, but at the same time maintain mandatory social distance and take all precautions as done by the health professionals. It is a Herculean task. The sources of news will not talk to you in the same ease if your mouth is covered with a mask and you are wearing a space-like PPE. In place where you do not have water, even to drink, where the question of arranging sanitizers. There was supply of hygiene essentials like sanitizers and masks, but very limited. The Press Information Bureau held regular press conferences on this pandemic right in this hall, almost daily, with top officials from Ministry of Home and Health, which provided information critically needed in such grave situation. The pandemic did not spare the highest government information center either, with any of its office, including its head, the Principal Director General, who used to be on the dais during these daily events on holidays, himself became a victim of corona for nearly a fortnight. But the show went on, and the press lounge of the NMC and the media workroom provided a much needed space to work even during this critical period and even during the lockdown too.
The crucial role of the media is unprecedented time like this also contributed a lot to the impact of the pandemic on it. Unlike scores of white-collar jobs, the media cannot operate from home and must be at the site of happening, from hospital to crematorium. At the end, it only paid a heavy price. COVID-19 was not like any other pandemic, and it is novel disease. To explain to readers and to put it in the right perspective for the common man by a non-health professional was more difficult. While reporting the magnitude of the pandemic, caution had to be taken for correct reporting and at the same time not to create a panic situation. PCI did issue some media guidelines for overall media coverage during this crisis, which were of great use. Role of the media was praised by none less than the Prime Minister, Vice President of the country, who have all lost the fourth estate for making common people aware of the pandemic and the effective ways to handle it. The pandemic is nowhere seeming to be coming to an end. In countries where it has passed its first and second phase, it is now emerging in a third wave. In areas like Delhi, where it is subsidizing, cases now rising again. With the festive season, year-end celebrations, winter setting in, amid a highly polluted environment, have built a heavy cocktail of concerns. Despite all the gloomy pictures, media have been the better, has to fight the pandemic for the future of the society and let us all hope Corona will end and life will be normal once again. Thank you all. Thank you, sir. May I now again invite Shri Ravinder Kumar, former member, Press Council of India, and editor, statesman, to share his insights on this National Press Day. Most distinguished members of Indian Press Council, thank you for inviting me to this most important occasion. I know that Indian Press Council is celebrating this occasion for the last so many years, and I was joining to some of them. It's been a remarkable achievement because the Press Council of India has been working on press freedoms and responsible journalism for a very long time. I know that the pandemic that is causing major problems for all people, for all humanity, but it is causing a remarkable difficulty to the members of media, because media is communication, connecting to people. And when there's a pandemic, achieving the missions of journalists has become extremely difficult, because I'm sure that all the media members are trying to collect correct information, work on the people, and disseminate that information. But with the pandemic, how can they do that? And also with the pandemic, many sectors have difficulty in payments, and the workers in media, the participants in media are under this pressure, financial pressure as well. So there are many media people, journalists, at other levels, they've been having a very difficult time sustaining their well-beings and bringing enough income to their families. So this pandemic, COVID-19, have caused a lot of problems, especially on the media people, but also to all the people, because they had a difficulty collecting the information, understanding what is happening, and pandemic just stopped. Different countries connecting to each other physically. Yes, there is online means to communicate, but it's been a very challenging period for all of us. And because media participants have been
connecting to people, collect information, to write about what is happening. They were, yes, of course, the health officers or people working in this health sector had been under major threat, but media people also has been under threat as well. And we know that we hear that there have been a lot of people, media participants, who caught COVID-19, and some of them lost their lives, unfortunately. Some of our members too, I know at least 2 of them from Iraq, had a terrible sickness. I mean, it's been not very easy for them. For weeks, they've been under great health problems. And so we see that, yes, a lot of people are influenced, affected, but media people were affected greatly, disproportionately from this pandemic. And also, of course, they were under the threat of losing their livelihoods because they couldn't continue working, some of them, or some of them, the work conditions for some of them had deteriorated. Some of them had to work half of the time and earn half of their salaries. So, yes, it was a disaster for the whole humanity, but it was basically a major problem for the media people. And I know that in India, things were not very easy. Yes, in all those countries, in many countries, the things have been very difficult. But India, we are following and we are feeling very close because we worked together for so many years that we feel very close to each other. And it was very upsetting to hear some news about pandemic causing lives in India and in neighboring countries. And that has caused a lot of upset, so sorrow on our side as well. Well, I hope things will be improving very soon because I know that there are some studies about vaccines and they're almost coming to the end, the trial period, so probably we can find some solutions or we can find some remedies or some medicines to make the sickness to have not its full effect. And I hope that it will happen very soon and we'll get over those days and having much better environment, health-wise, working conditions, welfare conditions will be improving for everybody, but for all of us, but also for the media people. So I want to congratulate your press day. I know that this hasn't been the best press day as far as the environmental conditions, the pandemic is concerned, but of course we still learn. And maybe we learn from that if we can take it as a teaching and we can learn from all those things happening that we shouldn't take things for granted. If we're healthy, if we have a nice good day with not so many threats, we should be able to be grateful. And that's, of course, I know that Indian culture is a very mature culture. It's a very old civilization. And many of our members are coming from very old civilizations, but in some parts of the world, they don't realize how important it is to have a good environment and good relations with the environment.
and all those other living creatures living in that environment. Maybe, I know that it is not a problem for us, but some communities, some societies don't see it. And they see that human beings are superior to the others, and they can do whatever they want to the environment or to other living creatures, which is not true. And I hope this could be a lesson to some of us on this beautiful world, and we rethink and appreciate all those beautiful things around us, and we'll be more careful about using them or finishing them off. I hope everything will be much better. Of course, I hope that in many communities, people get more awareness, realization of all those beautiful things around us, and then the problems will be automatically solved. Thank you for listening to me, and we hope to meet in other celebrations, I hope. Bye-bye. Thank you, Dr. Sulekar. That was Dr. Sulekar, President, World Association of Press Councils. We are extremely thankful to her for sharing her insights today, and it was very informative. I regret to let you know that due to some technical error, we couldn't connect Mr. Ravinder Kumar. We shall move on to the next segment, and for this, may I now invite Mr. Justice Mumtaz Uddin Ahmed, Chairman, Bangladesh Press Council, to share his thoughts on this occasion. May I now have his address, please? Thank you very much. Hello? 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 I think you hear me. Hello? Yes, sir. Thank you very much. Now is afternoon in Bangladesh. I have been watching this celebration from morning. I have heard today. I pay respect to the chairman of this today's event, Mr. Justice C.K. Prasad, and I'm grateful to Mr. Prasad. I felt really honored to receive invitation from the Honorable Chairman of the Press Council of India, Mr. C.K. Prasad, to grace this webinar in order to celebrate this historical day of India, National Press Day. I, on behalf of the Press Council of Bangladesh, express heartfelt thanks and regards for the same. This subject is very much befitting in connection with this day celebration and deserve appreciation. Mr. President, I've heard the Honorable President message of the Honorable President and actual lecture of Honorable Vice President and message of Honorable Prime Minister and the lecture that is by or information which I have heard. Then the soul-touching speech given by Mr. Gupta, very touching, very touching. I also heard my brother, Mr. Sikar Nayak, and then I also heard the Honorable Chairman of the Press Council of World Association of Press Council, Sulekar. So, what more I can eat? So, whole world was locked down. So, everywhere we have lost in the process. COVID-19, during COVID-19, we have lost our senior politicians, ministers, poets, engineers, and in the doctors, nurses, police, all categories of people were died during this COVID. So what you see, this is Mr. Sikar Naik correctly said.
Not a poor man or the rich man, nobody was raped. So everybody is alive before this COVID-19. So this is the scenario is facing over the world. In respect of what I tell, we are seeing this pandemic, you see, have taken many journalists from us. Many journalists, you see. They have suffered a lot. Even then, they, being the front fighter there in the street, for 24 hours, distributing news, they did not care of their life. They did not care of their families. So they are in the street, and correctly, Mr. Gupta correctly said, they covered news for everybody, distributed news for everybody. But you see, the poor man left without any service. However, I communicate one thing, you see, the Bangladesh government, Honorable Prime Minister, you see, given cash incentives at least 4,000 journalists. And those who died during the process, you see, granted compensation to the deceased families. You know, the big houses, you see, they also retain their workers. Pay cut is there. The small houses close their publication. Ultimately, you see, hundreds of now they're jobless. So this is the position, not only in this sector, in all sectors, you see, we are facing this problem. Not in India or Bangladesh, the whole world is suffering itself. COVID-19, you see, economic disaster is there in all sectors. Since economic disaster is there, then you see the advertisers stop advertising. So the papers that the publication side, they do not receive also, you see, the regular payment from the advertisement. The media houses have started facing one constraints in the changed economic reality caused by the COVID-19 outbreak, as newspaper circulation has declined. Advertisements have become scarce, and bill collection has run into problems. Journalists have also started contacting the disease while they are discharging their duties. In such trying times, not only in Bangladesh but also outside, media houses are putting in efforts to take up people's voice with governments regarding the management of the disease outbreak and to create awareness of the contagion among people. These are the scenarios in Bangladesh also. So, my humble arts, when I have been working with my brother, Mr. Justice Prashad, he always said that unless we can give the financial freedom to the journalists, what freedom they can feel. So unless the freedom is there, financial freedom is there in Bangladesh and all other countries also, so the journalist community will not do what. Now you see in this position, I think the government of India as well as my government also, they are working for the journalists, and I understood our Honorable Prime Minister is going to give incentives, more incentives to the journalists who lost their jobs. You see, this is the position. Now you see the inflation. The government, the hundreds lost job, small houses stop publication, big houses cut pay and returns to workers. This is real the position now. This is the impact. Not only in this sector, in all sectors facing. Since August this year, the food swing working has been started. So now you see the people are people are working nicely and they are now in a good position. But the second wave is coming. You understand?
In Europe is facing already started to face this pandemic. And Bangladesh has already, government has issued caution to the public. So you have to have obey the rules. Obey the rules. Otherwise, you see, nobody will be spared again. Yes, we lost 694%. Now the rate reduced to 13 to 24 per day. In all, 1,194 death causes is there. So we're facing a lot, and the caution is there. We have to take caution, and not only there, the version is that you see, unless everyone is safe, everyone is safe, nobody is safe in this world. So we have to work together for particularly for this sector. My brother, Mr. Sikha Prasad, felt, I understood, but government has also come forward to give aid to the vulnerable community. The delegation is so much, you see, everybody. This is particularly, I appreciate the speech given by Mr. Gupta. And this is the position. What more I can? Mr. Naik also added. So we have to work together. And I urge the government, all the governments of the world, so that they should come forward for this salvation of this sector. Unless the government aid is there, so nobody will be able to survive. So I hope I hope every government will come up to the aid of the journalist community. And today's deliberation in the backdrops, the Press Council of India initiates a debate and discussion on the topic, welcoming insights, suggestions, views from across the government. So this is a nice subject, and everybody spoke nicely and vividly. So I think we should work together. So this is what. So in this day, we solemnly affirm to work together for freedom of press. Thereby, the Press Day celebration will help us to uphold the freedom of press globally. Thank you very much. I wish all the success. Thank you very much. Thank you, sir. We are extremely grateful for joining us today and for sharing your insights. Now I would like to invite all the present members of the Press Council of India for a very short interaction on today's topic, the role of media during the COVID pandemic and its impact on the media. Hello. Hello. This. Myself. मेरी अलग कर दे शॉल वापस दे रही हूँ आज बोलूंगी अच्छा I think
Jadi lancar saja. Bicaranya. I think Mr. Balvinder Singh Jammu, sir, would like to speak first. So can we kindly give him the floor, and then we follow up with the other members. It is a request to all the members to kindly switch off your mic or mute your mic, and please let Mr. Balvinder Singh Jammu to take over. Yes, sir, we can apply. Hello. Can you hear me? Hello. Yes, sir, please proceed. Balvinder Jammu. Please, sir. हाँ, चेयरमैन सर, मैं पहली बात तो पेंडेमिक के इस दौर में बहुत सारे जर्नलिस्ट उनकी तो जान गई है। ये मुद्दा मेरे से पहले जो जयशंकर गुप्ता जी उन्होंने भी उठाया था, लेकिन जो लास्ट मीटिंग थी उसमें भी ये बात हुई थी कि हमारे जो जर्नलिस्ट है उनको कोरोना वॉरियर का ऐलाना जाना चाहिए, डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो उसी से उनके जो फैमिली मेंबर है उनको जो मुआवजा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, 50 लाख का मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। ना ही जो हमारे डिग्नरी थे आज जो बोले उन्होंने भी इस बात पे कोई बात नहीं की। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि जस्टिस मुमताज जो उन्होंने जो बात कही कि पत्रकारों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन जिनका नुकसान हो गया है उनके बारे में सोचना चाहिए, और जो कोरोना वॉरियर का मामला है उसकी बात होनी चाहिए। और तकरीबन मोर देन 130 जर्नलिस्ट लॉस देयर लाइव्स इन दिस कोरोना के दौर में, वो जाने अपनी गवा चुके हैं। इसके बारे में फैसला होना चाहिए। ना ही केंद्र सरकार ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं इसके बारे में किया, लेकिन आंध्र प्रदेश, पंजाब और कुछ और स्टेट ने ऐलान किया है। तो आंध्र प्रदेश ने तो 5-5 लाख दे दिया है, लेकिन देश में कुछ होनी चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए। 2-3 दिन पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी उन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए पैकेज अनाउंस किए हैं, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया। हमारे इस कोरोना दौर में मेरा ख्याल 1/4 जर्नलिस्ट जो जॉब गवा चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं, उनके लिए उनकी मदद करने के लिए वो फंड बनना चाहिए। वो फंड होगा उसी से उनकी मदद की जा सकती है, ऐसा फंड बनना चाहिए, उनके लिए कोई मदद होनी चाहिए। मैं अगेन यही बात कहता हूँ कि जस्टिस मुमताज ने जो बात कही कि बांग्लादेश में जो उनकी सरकार है वो मदद कर रही है, हमारी सरकार को भी जो केंद्र की सरकार है उसको इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए और को फंड कैंप किया जाना चाहिए। जो जर्नलिस्ट की जॉब गई है उनको कैसे किया जाए, जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री उसको भी पैकेज मिलना चाहिए। ये 2 बातें के ऊपर बात होनी चाहिए। एक बात जो पिछले दौर में जो जर्नलिस्टों के ऊपर अटैक हुए उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उसके लिए हमें प्रेस काउंसिल को इमीडिएट कोई स्टेप लेने चाहिए। अच्छी बात है कि जो रिट्रेंचमेंट हुई है उसका सू मोटो नोट्स लिया है, हमने भी लिखा, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, हमने लिखा, आपने सू मोटो लिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इसके आगे भी कोई कदम जो होने चाहिए ताकि जो बातें गलत हो रही हैं उनके रोका जा सके। जो जर्नलिस्ट अपनी जॉब खो चुके हैं उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रेस काउंसिल को इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम प्रेस को कुछ और ताकत देना चाहते हैं, ये ताकत मिलनी चाहिए ताकि प्रेस काउंसिल जो बड़े काम जो कर सके। ये 3 मामले इनके बारे में मैं चाहता हूं कि प्रेस काउंसिल को पहल कदमी करनी चाहिए। जो जर्नलिस्ट अपनी जॉब लॉस्ट हो चुकी है, कर चुके हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, के बारे में भी हमको पहल कदमी करनी चाहिए ताकि मामला जो आगे बढ़ सके। तो और जर्नलिस्ट जो अभी भी रिट्रेंचमेंट हुई है उसको रोकने के लिए भी
प्रेस काउंसिल को इंटरवीन करना चाहिए, तभी जो पेंडेमिक का मामला है उसमें सबसे ज्यादा सफर जो जर्नलिस्ट ही ना करे, इस मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को आगे आना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you, Mr. Jammu. May I request now Mr. Ashok Navratan ji to keep his thoughts today. चेयरमैन साहब, सादर अभिवादन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान जो भी हमारे पत्रकार साथी दिवंगत हुए हैं उनको सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिए, पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं, परिषद को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ज्यादा लंबी बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरे और भी साथी मेरे बोलेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Ashok Kumar Navratan, for keeping your words today. Next, I would like to invite Professor Dr. Sushma Yadav. Ma'am, you can take over. I think we are unable to connect her. So if there is any other member who would like to speak on the topic today. Mr. Sham Singh Panwar. Mr. Panwar to please take over. We will try to connect Dr. Sushma Yadav after this. सर, सम्मानित को सर हार्दिक करना है। वास्तव में आज कठिन दौर है कि कोरोना महामारी के चलते को आज वर्चुअल तरीके से नेशनल प्रोजेक्ट मनाना पड़ रहा है और हमारी काउंसिल ने जो व्यवस्था की है उसके भी हम सभी धन्यवाद देते हैं। राष्ट्र हम सभी परिवार के लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं, और ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि प्रिंट मीडिया के लिए नियंत्रण अपनी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को भी नियंत्रण के लिए अपने प्रेस ऑफ इंडिया के अधिकार बढ़ाने चाहिए। आज के दौर में यूट्यूब, पोर्टल आदि बहुत से प्लेटफॉर्म पर का प्रसारण किया जा रहा है। इनके नियंत्रण के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने अधिकार और बढ़ाने चाहिए और इनका नियंत्रण अपने अधीन करना चाहिए। हमारी पत्रकार की सभी हस्तियों ने जो संघर्ष किया है, लेकिन हम संस्थानों को उन्होंने जो सहयोग दिया है, हम आज सभी शुभकामनाएं देते हैं। आज कोरोना काल में हमारे मीडिया संस्थान हैं, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे मीडिया को अधिक है, जैसे अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन पैकेज जारी किए हैं, उसी तरीके से हमारे मीडिया संस्थानों को भी पैकेज आए, ताकि जो जर्नलिस्ट, पत्रकार आदि मीडिया कर्मियों की उनको और बचाया जाए। अंत में हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। For joining us today. Next, I would like to request Mr. Rakesh Sharma from Aaj Samaj to please take over.
With this, we conclude the interactive session and we will move to the next segment. May I now request Honorable Chairman, Press Council of India, Mr. Justice Chandramouli Kumar Prasad, to address the media on this very special day. His Excellency, the President of India, Mr. Ramnath Kovind, Honorable Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu Sahab, the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Minister for Information and Broadcasting, Mr. Prakash Javadekar, Justice Mumtajuddin Ahmed, Chairman of the Press Council of Bangladesh, Ms. Sule Akar, the President of the World Association of the Press Council, Mr. Prakash Dubey, the Group Editor Bhaskar, Mr. Ravindra Kumar, Editor Statesman, Mr. Jaishankar Gupta, and Mr. C.K. Nayak, the members of the Press Council, the distinguished guests, ladies and gentlemen. I take this opportunity to convey to the media fraternity all over the world our greetings on the National Press Day. While it gives me great pleasure to welcome you on the occasion of the National Press Day, I share with millions of families across the world the immense grief and sadness that they have suffered due to loss of their near and dear ones to the deadly coronavirus. Starting from China, it has engulfed nations worldwide, creating socio-economic and political upheavals, the impact of which is being felt globally. The question is, will the world ever be the same again? And would journalism have to change and make the necessary arrangements in the new world order? Although it is sad that we are not being able to hold this event physically and meet everyone on this occasion, but at the same time, I'm glad that we got this virtual stage to share our perspectives regarding the role of media during COVID pandemic and its impact on the media, and reflect on how the media is combating this global crisis. Media is an immense power which has the ability to mold public opinion, perceptions, and beliefs. It is an awesome instrument for social as well as psychological engineering. Social analysts say that this is the age of information, and information is knowledge that empowers people and guides them to make the right choice. However, if that knowledge is acquired from misinformation, then it can be equally devastating. Before the arrival of the pandemic, media's role was never felt to be more significant and critical to human existence. In December 2019, the World Health Organization talked about mystery pneumonia. Since then, the virus has been identified as SARS-CoV-2 and named the infection as COVID-19. By March 2020, more than 72 nations fell in the grip of this deadly contagion, and its impact has been felt worldwide in our social life or on global economy, which has brought everything to a standstill. Initially, it was comprehended that to analyze and understand the behavior of the virus and invent a curable vaccine would not take long, given the advancement of the medical science. Within months, we heard about medical trials of vaccines being carried out by various nations to combat this deadly virus, and the cure seemed just around the corner. Claims to combat the disease increased, but there was much confusion regarding the accuracy of the information. The world stood paralyzed, causing wreckage
to global economy, and the media industry was not spared from its impact. Amidst all the crisis, when the Pope and Sankaracharya have become pedestrian and are under fear despite communion with God, credit must go to the media that it has kept us connected to the outer world with our near and dear ones and given us the hope that it is not the end, but is the beginning of a new world where we have to learn values like perseverance, adjustments, and show reverence towards others and also towards hygiene. India being the second most populous country with its cultural, linguistic, and religious diversity was predicted to be one of the worst affected nations by the virus with high mortality rate. However, right from the beginning, the citizens of India understood the gravity of the situation and pledged with the government to fight this war against coronavirus patiently and calmly by imposing an early lockdown to mitigate the damages of the virus. It was said then, "Jaan hai to jahan hai." Suddenly, due to COVID pandemic, the world over human race has become prisoners in their homes. They are not expected to come to the streets, save for basic needs. During this ongoing crisis in India, media, as expected, played the role of informer, motivator, and communicator by sharing relevant and useful information, mainly in the form of news that can be used, help to raise awareness amongst the population. Simple instructions like reminders to wash hands, maintain hygiene at living space, washing food items before use, and wearing masks have in fact saved millions from falling prey to the virus. The extended lockdown and quarantining that were prescribed to be the only medicine in combating coronavirus by experts worldwide also created a negative impact on the mental health of the masses. The uncertainties raised the level of anxieties, leading to violent occurrences even at domestic space. During this period, media has played the role of an ally and supporter to motivate the masses to keep up their spirits high in fighting this situation. Dissemination of government messages at the correct time has helped people to know and assess the situation and act accordingly to keep themselves as well as their families safe from contracting the virus. During this pandemic, there has been a huge spurt in digital content. For several months, COVID-19 pandemic has remained at the center of news reporting. Initially, media focused on stories concerning the origin of the virus. Later, stories were circulating concerning remedies or cure. Even homemade remedies were prescribed on the social media at large to immunize masses against this viral infection. Although it is commendable that at one hand, the media is keeping us updated with information that is essential, but having access to this massive volume of information poses the question regarding the authenticity, credibility, or reliability of such information. Reporting on COVID-19 is unprecedented and difficult for the media, not only from the content perspective, but also challenging for the media persons to work in gathering the information, especially from the ground zero. Truth, accuracy, fairness, impartiality, and humanity, service and accountability are the few fundamentals that the journalist or any media person should keep reminding themselves in covering stories on COVID-19. It is make or a break moment for the media. Until now, media has been playing mostly the role of a savior and should continue to do so by avoiding any sensationalism or scaremongering reportage. News content merely based on rumors should never be given any space in reporting, and journalists, being the gatekeepers of information, need to differentiate between the facts from rumors, especially during these trying times. Single piece of misinformation can become lethal and lead to public disorder. While reporting on a particular case, media has to restrain itself from revealing the identity of the contracted person unless with consent
Mitigating the spread of misinformation should be the prime responsibility of media, for which media can always seek for expert opinions, such as those of medical practitioners, scientists, or any other stakeholders who are directly or closely associated with the management of this pandemic. It is important for the media to avoid any unwarranted attribution to the generation or spread of this contagion to particular geographic area, community, race, religion, or group of persons. It is the job of the media to collect facts, process information, verify and disseminate information, but this should never be done at the cost of their own health. Revering hard work and sincerity of the journalists during this pandemic, the Press Council of India has passed resolutions to address the journalists at COVID warriors. And I'm glad to inform you that His Excellency the President of India, while sending his message on this press day, has addressed the journalists as Corona warriors. Further, to ensure safety of the journalists during the pandemic, PCI passed advisory for the management of the media houses to take necessary steps in ensuring safety of their staff, those who are working at the ground zero, by providing them with PPE kits, masks, hand sanitizers, and face shield, etc., so that they can carry out their journalistic duties without the fear of getting contracted by the virus. An appeal has also been made by the Press Council of India to the state governments to extend financial and medical help to all those journalists who have contracted the virus while reporting on the pandemic. The Press Council of India condoles the demise of all those journalists who have lost their lives on their line of duty and sincerely sympathizes with their families and appeal to all concerned to help them mitigate their hardship. In this connection, it is worth mentioning that the Council has also proposed to the government to cover them under group insurance scheme. It needs no emphasis that the journalists should also follow the WHO guidelines while covering the news on pandemic. The media coverage has brought to light the massive effort that has been endowed by the public, social organization, and even the government in addressing the aggravating issues such as homelessness, migrant workers, rising job loss, and the damage to the small-scale business. It has also brought forth the government multinational companies and big business houses need to become more effective providers of public service. The nature of news collection and dissemination has also changed. From the physical space of an office, journalists are working from home as an other job. During this pandemic, media is expected to maintain a strong sense of responsibility and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated. Apart from the health hazards that journalists are facing while covering news stories on pandemic, the problem of loss of jobs is staring at their faces, not only in India, but globally. In this regard, Press Council of India, in its attempt to resolve the issue of retrenchments of hundreds of journalists throughout the nation, has called for comments from the concerned media houses and its managements. But to my utter surprise, media itself has not given due space for this burning issue. Media sermons every moment and everybody, but their hypocrisy comes into surface when the camera is turned on them. They pretend that they are objective and independent while dealing with the political parties and the politicians. But what happens to them when they come across media mughals? Media silence during the lockdown and wage cuts and in mass termination of journalists by big media houses did not hit the headlines. The dispute between mother-in-law and daughter-in-law finds place in newspapers and subject matter of debate at prime time in national channels. But termination of a large number of media workers did not invite any discussion. One question that bothers me: can media claim right to commit journalistic excesses even to the point of manifest bias? To me, the reason is obvious, and so it mildly, media has not been able to attract the best brains.
I believe that retrenchment and wage cuts of media personnel have become a global issue, and I encourage suggestions from any quarter which may help us to resolve the crisis. I commend the community of journalists to bear in mind the Gita's words, Seva Parmo Dharma, service is the ultimate duty while reporting. I would like to share a piece of information that 2020 edition of the North of Journalist Conduct shall be available on the Council's website very soon. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for sharing your thoughts today. May I now request Srimati Anupama Bhatnagar, Secretary, Press Council of India, to propose the word of thanks. Good afternoon. Honorable Chairman, Press Council of India, Shri Justice C.K. Prasad ji, members of the Press Council of India, distinguished participants, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on the occasion of the National Press Day celebrations today. I express my profound gratitude to His Excellency Shri Ramnath Kovind ji, Honorable President of India, for his encouragement of the press and for acknowledging the valuable role played by it during the pandemic. I convey my sincere gratitude to the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, for enlightening us with his deep insight of the subject and for his commitment to the freedom of the press. We are deeply grateful to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for his word of encouragement to the media, for doing exceptional service of spreading awareness in dealing with the COVID pandemic. We are immensely inspired with the message. I am grateful to the Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Prakash Javadekar ji, for his valuable thoughts. We have been greatly enriched by his thoughts and words of wisdom. I would like to thank the distinguished speakers, Mr. Justice Mumtazuddin Ahmad, Chairman, Bangladesh Press Council, Dr. Sule Akar, President, World Association of Press Councils, Shri Prakash Dubey, ex-member PCI and Group Editor of Dainik Bhaskar, Shri Jayashankar Gupta and Shri C.K. Nayak, members of the Press Council of India, for making excellent presentations and making this webinar interesting and meaningful. I take this opportunity to express deepest gratitude to the Honorable Chairman, Press Council of India, Shri Justice C.K. Prasad ji, for his precious contribution towards strengthening of the Council under his able leadership. Without his support and guidance, today's celebration of National Press Day would not have been possible. I would like to take a moment to acknowledge the immense contribution of the Press Information Bureau. In particular, I am thankful to Principal DG, PIB, Shri K.S. Dhatwalia ji, Ms. Kanjan Prasad ADG, Shri Saurabh Singh, Deputy Director and NIC officials for organizing the logistics of this event. I am thankful to all the participants who attended the webinar with enthusiasm and made it successful. These words of thanks would be incomplete without expressing my gratitude to the officers and staff members of the Press Council of India who have been working very hard during these difficult times. Thank you once again. Stay safe. Dhanyabad. Thank you all for your esteemed participation and have a good day.
receive His grace through prayer. Prayer is the canal connecting us to the mighty ocean of grace. When we go on praying to God, the floodgates of His mercy opens and it begins to flow towards us. So let us thank and pray our Almighty on this beautiful occasion. Let's join our hands, close our eyes, and bow our heads in reverence to our Almighty Lord. Heavenly Father, we praise and thank you for this beautiful day. Father of light and wisdom, we thank you for the unique gift of every child you have given to us. Fill each student with fresh enthusiasm and a heart that is excited to learn and grow. Cover them with your enduring love. Give them your confidence and grace. We ask you to bless and help all of them to keep learning every day of life, no matter what the subject may be. Let them be convinced that all knowledge leads to you, and let them know how to find you and love you in all the things you have made. Heavenly Father, you dwell within each of our students and encourage हमारे लोकतंत्र का मंदिर, हमारी संसद, जहां के सेंट्रल हॉल में अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ दिलाई जाएगी श्री रामनाथ कोविंद को 14वें राष्ट्रपति के रूप में. And that's the circular Parliament House. Parliament, the cornerstone of our democracy. President Pranab Mukherjee and President-elect Shri Ramnath Kovind descending the stairs onto the central court, central area of the forecourt. A modern nation is built on pillars of equity, democracy, and justice, and every president, as he or she takes oath, reassures each and every Indian's faith in the system. ये लोकतंत्र की शक्ति है, ये ताकत है हमारी. श्री कोविंद ने ये बात कही कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही मैंने चाहा था कि मैं इस सर्वोच्च पद तक पहुंचूं, लेकिन ये लोकतंत्र का चमत्कार है कि यहाँ आम जन को भी सर्वोच्च पद पर जाकर देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है. प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संसद भवन के लिए. उनकी विशेष लिमोजीन राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने कमांडेंट के नेतृत्व में राष्ट्रपति महोदय के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रहे हैं. So as the presidential limousine, escorted by the president's bodyguard, makes its way
from the forecourt towards the central hall of Parliament, many thoughts going through the President-elect and the President's minds. This, of course, is the central portion, which is the Jaipur column here, and the cavalcade will skirt this, go around it. It's truly a masterpiece of architecture, the central column, also called the Jaipur column. And it stands at a height of 145 feet at an approximate distance of 555 feet from the main gate. गौरव, बड़ा दिलचस्प होगा ये अंदाज़ा लगाना कि इस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं, और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, दोनों के मन में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। ये बड़ा भावुक क्षण होता है। Absolutely, Sanjeev. Every president, as he or she takes oath to this high office, reassures each and every Indian's faith in its leaders that the nation and the well-being of its people will come before any other ideology or agenda. Democracy places people first, and the people place some leaders first to protect, to lead, and enrich the fabric of the nation. As our outgoing President Shri Pranab Mukherjee said in his farewell address to the nation, he said, "My sacred text has been the Constitution of India, my temple has been the Parliament of India, and my passion has been the service of the people of India." Powerful words, very, very profound and very meaningful. Right in the center, of course, as we said earlier, you can see the Jaipur column designed by Sir Edward Lutyens and was sponsored by Maharaja Madhav Singh of Jaipur. It's made by sandstone topped by the Star of India emerging from a 5-ton bronze lotus and was installed in 1930. भारतीय गणराज्य, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति हालांकि संसद के अंग होते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी भी सदन में न तो बैठते हैं, न उनकी चर्चाओं में भाग लेते हैं। संसद से संबंधित उन्हें कुछ ऐसे संवैधानिक कृत्य हैं जिनका निर्वहन करना होता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं और जो बात बार बार कही जाती है, रेखांकित की जाती है, संविधान की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, ये महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक। और इस पद को ऐसी कई महान विभूतियों ने सुशोभित किया है, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मजदूर नेता, कई ऐसे लोग जो सार्वजनिक जीवन से देश के इस सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचे और जिन्होंने इस महान लोकतंत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। आज उसी महान लोकतंत्र और देश का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जहां एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और शुरू हो रहा है नए राष्ट्रपति का कार्यकाल। A question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task and delivery orientation: what really is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, history, tradition, ceremonial protocol, all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered many storms. Institutions need to be nurtured organically, keeping the present in mind. They go beyond the individual, and that's the reason tenures and terms are linked to people, not institutions. In fact,
A healthy democracy rests on transitions of people, parties and power. The seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions only serve to strengthen democracy. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके कार्यकाल के 2 वर्ष उन्होंने पिछली सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया और उसके बाद सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जब आई तब से उनके साथ उनके कार्य को लेकर और उनकी कार्यशैली को लेकर दोनों में जो विशेष सौहार्द है वो कई बार प्रकट हुआ है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से भी और प्रधानमंत्री के शब्दों में भी। So here we are, the wonderfully attired President's bodyguards. A little bit about them. The personnel of the regiment are handpicked, all of them at least 6 feet tall. Besides performing ceremonial duties for the President, the officers and men are also trained horsemen, paratroopers and tankmen. The regiment has seen action in Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965 and in Operation Power in Sri Lanka in 1988. In fact, the men of the bodyguards have also distinguished themselves on United Nations duties in Somalia, Angola and Sierra Leone. A detachment also serves in Siachen Glacier, the highest and coldest battlefield in the world. धीरे धीरे काफिला रायसीना पहाड़ी से उतरकर विजय चौक से मुड़कर संसद भवन के गेट नंबर 5 की ओर बढ़ता हुआ, जहां इनकी अगवानी के लिए इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उनकी अगवानी के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित होंगे। In fact, the Central Hall in Parliament House is a place of great historical importance, and the transfer of power on the 15th of August 1947 from British to Indian hands took place in that hall. In fact, the Indian Constitution was also framed in the Central Hall, and today our new President, the 14th President of the nation, Shri Kovind, will be sworn in there. इतिहास के पन्ने इसी तरह एक एक करके जुड़ते जाते हैं, एक नया अध्याय आज उसमें जुड़ता हुआ। गौरव, एक नई शुरुआत जो प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए जो की, कि तब तक राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो उन्होंने परंपरा बदलकर फिर उसको माननीय उन्होंने तब्दील किया। Right, and that was the most beautiful part of the president's tenure. He was a president, but also understood the institution and beautifully understood the current context of how the world is changing and so many things need to change. And here we're giving you a long shot of the limousine along with the president's bodyguard going into the gate at Parliament House. काफिला संसद भवन के द्वार से आगे बढ़ता हुआ In fact, quotations have a beautiful way of conveying a lot in very, very simple words. And at the Central Hall of Parliament House, this is right at the top of the entrance of that hall, there is a beautiful quotation which says, and it's in Sanskrit, the English meaning is, that one is mine and the other a stranger is the concept of little minds. But to the large-hearted, the world itself is their family. This truly epitomizes what India has always stood for.
दिल्ली में वैसी भी हरियाली काफ़ी है और इन दिनों मौसम के हिसाब से देखें तो हमारे इन तमाम दृश्यों में आप हरे भरे घने वृक्षों को भी देख सकते हैं इस लोकतंत्र के मंदिर के साथ। And here arriving at the entrance of the central hall, the president's bodyguard is escorting the presidential limousine. Slight sun seems to have come out, and of course perfect for capturing wonderful images, some of those we showed you earlier, panoramic shots. और धीरे धीरे वो महत्वपूर्ण क्षण अवसर नजदीक आता हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रवेश कर रहे हैं संसद भवन में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी, बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संसद भवन परिसर में यह आखिरी प्रवेश और अब उनके सम्मान में सलामी दी जाएगी। और संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हुए साथ में हैं भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर अगवानी करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। और यहां से सीधे संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में पहुंचेंगे। पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में जाते हुए बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का यह आखिरी प्रवेश संसद भवन में। 14वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगले 5 सालों तक अपनी सेवाएं रामनाथ कोविंद देंगे। निश्चित रूप से इन तमाम सारे पलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी सुनहरी यादों के साथ यहां से विदा होंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में ले जाते हुए साथ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं। तो अब से कुछ ही देर में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस गरिमामयी समारोह के साक्षी आप और हम मिलकर होंगे। तुरही बजाकर यह संदेश संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में दिया गया है कि अब राष्ट्रपति संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लिहाजा उनके सम्मान में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में मौजूद प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उनके सम्मान में खड़े होंगे।
तो संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। महामहिम राष्ट्रपति जी, मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के दूसरे दिन होनी है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के जुलाई मास में के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास में के 29वें दिन को श्री रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के जुलाई मास के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास के 29वें दिन को जारी किया गया।
मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। मान्यवर, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री हामिद अंसारी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, न्यायमूर्ति श्री JS खेहर जी, एक्सेलेंसीज, संसद के सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मेरे देशवासियों, मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। यहाँ सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।
मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूँ। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है, हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूँगा। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूँ और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूँ। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम स्नेह से प्रणब दा कहते हैं, जैसी विभूतियों के पद चिन्हों पर चलने जा रहा हूँ। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफ़ी है। उनके लिए हमारे करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी। भारत की उपलब्धियां ही इस सदी की दिशा और स्वरूप तय करेंगी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। हमारे लिए ये दोनों मापदंड कभी अलग नहीं हो सकते, ये दोनों जुड़े हुए हैं और इन्हें हमेशा जुड़े ही रहना होगा। साथियों, देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है। विविधता ही हमारा वो आधार है जो हमें अद्वितीय बनाता है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं और एकजुट हैं। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ ही साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। एक तरफ जहां ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भावना से विचार विमर्श करके समस्याओं का निस्तारण होगा, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राष्ट्र हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। सरकार सहायक हो सकती है, वो समाज की उद्यमी और रचनात्मक प्रवृत्तियों को दिशा दिखा सकती है, प्रेरक बन सकती है। राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। हमें गर्व है भारत की संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर। हमें गर्व है अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर और हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम प्रतिदिन करते हैं। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे।
देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं। जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है या किसी वैक्सीन का आविष्कार कर रहा है वो राष्ट्र निर्माता है। जो नर्स या डॉक्टर सुदूर किसी गांव में किसी मरीज की गंभीर बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माता है। जिस नौजवान ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब स्वयं रोजगार दाता बन गया है वो राष्ट्र निर्माता है। ये स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। किसी छोटे से खेत में आम से अचार बनाने का काम हो, कारीगरों के किसी गांव में कारपेट बुनने का काम हो या फिर कोई लेबोरेटरी जिसे बड़ी स्क्रीनों से रोशन किया गया हो। वो आदिवासी और सामान्य नागरिक जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण, हमारे वनों, हमारे वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं। और वे लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं वे राष्ट्र निर्माता हैं। वो प्रतिबद्ध लोक सेवक जो पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं पानी से भरी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं, कहीं किसी कमरे में बैठकर फाइलों पर काम कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। वे अनगिनत महिलाएं जो घर पर और बाहर तमाम दायित्व निभाने के साथ ही अपने परिवार की देख रेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। साथियों, देश के नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उन प्रतिनिधियों में अपनी आस्था और उम्मीद जताते हैं। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यही जनप्रतिनिधि अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हमारे ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। सदियों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के दर्शन पर भरोसा किया है। ये उचित होगा कि अब भगवान बुद्ध की ये धरती शांति की स्थापना और पर्यावरण का संतुलन बनाने में विश्व का नेतृत्व करे। आज पूरे विश्व में भारत के दृष्टिकोण का महत्व है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की तरफ आकर्षित है। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। वैश्विक परिदृश्य में हमारी जिम्मेदारियां भी वैश्विक हो गई हैं। यही भाव हमें हमारे वैश्विक परिवार से, विदेश में रहने वाले मित्रों और सहयोगियों से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दे रहे प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है। यही भाव हमें दूसरे देशों की सहायता के लिए तत्पर करता है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का विस्तार करना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले सहयोग के लिए आगे आना हो। एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इससे भी और अधिक ज़्यादा करने का प्रयास और बेहतर करने का प्रयास और तेज़ी से करने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का पर्व मना रहा होगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुलें। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, इस देश के नागरिक ही हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे इन लोगों से इसी प्रकार निरंतर शक्ति मिलती रहेगी। हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था,
एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सपनों का भारत होगा, एक ऐसा भारत जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करेगा। ऐसा ही भारत 21वीं सदी का भारत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Respected Rashtrapati Ji, you have just addressed the members of Parliament. With your permission, I will read the first and the last paragraphs of the English version of the address. The rest should be considered as read. Respected Shri Pranab Mukherjee Ji, respected Shri Narendra Modi Ji, Shrimati Sumitra Mahajan Ji, Shri Justice J.S. Kher Ji, Excellencies, Honorable Members of Parliament, ladies and gentlemen, and fellow citizens. I thank you for electing me to the responsibility of the President of India, and I enter this office with all humility. Coming here to Central Hall has brought back so many memories. I have been a member of Parliament, and here in this very Central Hall have had discussions with many of you. Often we agreed, sometimes we disagreed, but we learned to respect each other, and that is the beauty of democracy. We need to sculpt high growth economy and educated, ethical and shared community and an egalitarian society as envisioned by Mahatma Gandhi and Deen-Dayal Upadhyay Ji. These are integral to our sense of humanism. This is the India of our dreams, an India that will provide equality of opportunities. This will be the India of the 21st century. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. मान्यवर, आपका आदेश हो तो अब समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की और वो अब अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। 21 तोपों की सलामी के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शपथ ग्रहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए
तमाम सभी मंत्री, मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों के और सांसदों से मिलते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण के बाद की संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। न्याय, समानता, बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन मैं करूंगा, ये शब्द अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहे। संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में तमाम सभी लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों और राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मिलते हुए और अब संसद भवन परिसर से बाहर कूच करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, साथ में है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। अब हम यह कह सकते हैं कि एक तरह से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विदाई दी जा रही है और इसका भी एक विशेष महत्व है। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति को विदाई देते हैं, नए राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति को उनके घर छोड़ने जाते हैं। इस दौरान पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपति एक बग्गी में सवार होकर पूर्व राष्ट्रपति को उनके घर छोड़ते हैं। लिहाजा इस बार रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 राजाजी मार्ग उनके नए निवास स्थान पर छोड़ने के लिए जाएंगे। जब संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रहे थे तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और अब शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। पूरे सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की विदाई और इस विदाई में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मान देते हुए प्रणब दा को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से राष्ट्रपति पद का जो प्रोटोकॉल होता है, जो सम्मान उस पद के तहत दिया जाता है, उस पूरे सम्मान का निर्वहन करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ ली। 21 तोपों का सम्मान उनके राष्ट्रपति बनते ही रामनाथ कोविंद को दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाई, जिसके बाद रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष को। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व के साथ साथ चारित्रिक सक्षमता भी लेकर के आए। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्र गौरव। साथ ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही उसमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, तपती धूप में खेती करने वाले किसान, वैज्ञानिक, भारत के युवा, चिकित्सक, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले लोग, पुलिस प्रशासन, शिक्षक, गृहिणी, ये सभी राष्ट्र निर्माता है। साथ ही रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 2022 को हम स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेंगे और जब हम स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएंगे तब ऐसी व्यवस्था भारत में हो कि समाज के अंतिम व्यक्ति का आर्थिक विकास हो सके। संसद भवन परिसर से बाहर आते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वहां पर मौजूद है। हमने देखा जब संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रहे थे तब
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आगे चल रहे थे, लेकिन अब शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अग्र पंक्ति में है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन परिसर से जाते हुए और अब रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए निकले हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शपथ ग्रहण से पहले जब राष्ट्रपति भवन से निकल रहे थे, तब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के हिसाब से इसी वाहन में आए थे, लेकिन तब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाईं ओर बैठे थे और प्रणब मुखर्जी जो कि तब राष्ट्रपति थे भारत के, तब वो दाईं ओर बैठे थे। और अब शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाते हुए शपथ ग्रहण के बाद कुर्सी का स्थानांतरण किया गया। जिस कुर्सी पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आसीन थे, उस पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे। 21 तोपों की सलामी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दी गई और उसके बाद अब प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व राष्ट्रपति को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने जाते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। The Republic of India has a new president, Shri Ram Nath Kovind, the 14th president of the nation. Shri Ram Nath Kovind, the second Dalit to become the president of the country and the first BJP member to be elected as president. Soft-spoken, well-read and articulate, Shri Kovind has an illustrious background in the legal arena. His understanding of the Constitution will aid him in essaying his role as the conscience keeper of the nation. हमारे देश में हमेशा ये माना जाता है कि किसी भी शुभ अवसर पर अगर वर्षा का आगमन हो जाए तो ये शुभ संकेत होता है और भारत के नए राष्ट्रपति ने 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण की है और संसद भवन से जैसे ही उनका काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर चल रहा है, तेज बारिश यहां एक शुभ संकेत इस अवसर पर, इस लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए। Nature has a melody of its own, the clatter of hooves and the beautiful sound of rain on the water, on the tarmacs, on the vehicles and on our shoulders, blessing not only the new president but each and every Indian as the heavens open up to say, we welcome you, we welcome you, we welcome you. ऐसे ऐतिहासिक अवसरों पर एक एक बात सबको याद रहती है और बाद में किस्सों के तौर पर उसे बयान किया जाता है। राष्ट्रपति पद की
शपथ के बाद तोपों की सलामी की गूंज से पूरे वातावरण में संदेश गया कि भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैं संसद सदस्य रहा हूं तो यहीं सेंट्रल हॉल में कई सदस्यों से चर्चा करने का अवसर भी मुझे मिला। उन्होंने संविधान की मूल भावना के बारे में बात की। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्व धर्म समभाव और ये संस्कृति की हमारी परंपरा है। हर नागरिक के लिए उन्होंने कहा कि हर नागरिक इस देश का राष्ट्र निर्माता है। India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the impossible seem possible. Tradition, philosophy, ideas, and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design. Tolerance, inclusivity, and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. Dissent has made us progress. Collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. रायसीना पहाड़ी के दृश्य वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दोपहर की इस बारिश में ये दृश्य और भी अधिक आकर्षक होते हुए, और इधर राष्ट्रपति का काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी की ओर से होता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संक्षिप्त भाषण में ये जिक्र किया कि मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हूं और यहां तक का सफर, यहां तक की यात्रा काफी लंबी रही है। श्री रामनाथ कोविंद को रामचरितमानस की कई चौपाइयां कंठस्थ हैं। हैंडलूम की खादी पहनते हैं। साधारण जीवन जिया है उन्होंने। Awash with sentiment, feelings, rain, and ceremony. Rashtrapati Bhavan, Parliament House, and the areas in between. Going up Raisina Hill, flanked by the north and the south blocks. A picture of rain-washed perfection. With people being the cornerstone of organic renewal, the context of the power vested in them, by them, needs to be understood. In fact, power is vested to empower. Power is the energy that is entrusted in capable hands to bring about change for the better, for the marginalized, and for the future. In fact, power, when it rests, strengthens the individual. Power, when it is in motion, strengthens people. Today, as we celebrate transition, we also celebrate simplicity, humility, and humble beginnings. President Kovind, who grew up with financial poverty, but with a wealth of determination. The belief that leaders cutting across party lines were unanimous in saying that he is a low-profile politician, a deeply spiritual individual, and of course a perfect gentleman. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। अपने गांव में कई लड़कियों का विवाह कराने में उन्होंने आर्थिक सहायता दी। साधारण जीवन लेकिन उच्च विचार का आदर्श, और अपने संबोधन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, रेखांकित किया उन बातों को। उन्होंने कहा कि हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है और हर नागरिक हमारे पारंपरिक मूल्यों का संरक्षक है और राष्ट्रीय गौरव
राष्ट्र निर्माण का आधार है। And each one of us is confident that he will bring to the highest office in the country credit and dignity. His contributions will enrich our national dialogue and thought, giving it depth of discourse as befits this high office. He is articulate, he is lucid in his thought and speech, and so far has played a significant role in furthering many lives. विश्व में कई लोगों के लिए ये कल्पना करना बड़ा कठिन होता है कि हमारा देश सचमुच कितना विविधता वाला है, और यही बात संबोधन में श्री रामनाथ कोविंद ने रखी। उन्होंने कहा कि विविधता हमारे देश की सफलता का आधार है। Skirting the Jaipur column, the President's bodyguard now escort the new President Shri Kovind and former President Shri Pranab Mukherjee to Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन के फोकॉट यानी अग्र प्रांगण की ओर बढ़ता हुआ, इसमें नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, the limousine drawing up to the saluting base. The role of the President, very, very critical in our democracy. Former President Pranab Mukherjee alights from the vehicle, and President Kovind at the saluting base here. President Kovind taking the salute, his first salute at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. And now,
will be escorted to the study. राष्ट्रपति कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ अब स्टडी की ओर प्रस्थान करते हुए ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन, जिसके एक एक पन्ने पर इतिहास भी है और संस्कृति की छाप भी। निकलते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूरे सम्मान के साथ भारत के राष्ट्रपति कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आगमन विशाल राष्ट्रपति भवन और लगभग 340 कमरे हैं यहाँ पर, और ये स्टडी की ओर बढ़ते हुए परंपराओं और औपचारिकताओं का निर्वहन बड़े ही शानदार ढंग से राष्ट्रपति कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति कोविंद की पत्नी श्रीमती सविता ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन जितना विशाल है, अगर इतिहास के पन्नों में देखें और इसकी विशालता को समझें तो वो हमें चमत्कृत करती है। ऐसा अद्भुत है ये राष्ट्रपति भवन। Welcome to Rashtrapati Bhavan, the office and home of the President of India. Completed in 1929, Rashtrapati Bhavan, designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker, is one of the most magnificent presidential palaces ever built. The erstwhile symbol of colonial power and imperial domination is today representative of Indian democracy, of its inclusiveness, plurality and secularism. This is not just the residence of the constitutional head of the world's largest democracy, but also in terms of area, the largest residence of a head of state anywhere in the world.
When the 13th President of India, Pranab Mukherjee, took over in July 2012, his vision reflected his statesmanship. Rashtrapati Bhavan is a heritage building. It is a living heritage. Since it had been constructed in 1920s, it had undergone a large number of changes which had started compromising the heritage character of this building. Therefore, it was essential at this stage to take corrective measures to restore the original integrity of the design and the construction of this very beautiful building. Much like this clock tower, time seemed to be standing still at the estate. It needed focused inputs from experts and a dedicated restoration team. We got Intac in. They worked with a team of 40 experts and within 6 months gave us a report which lays down the broad framework of what can be done, what should be done, and what should not be done. The mandate was to bring about a complete shift in approach towards the restoration, running, and upkeep of this heritage structure. We had to make every part of Rashtrapati Bhavan functional. We had to avoid purchases and make use of what we had in our Bhavan itself. The office of the President is called the Study. This is the formal meeting place for the President where he receives his guests and visitors. Murals by eminent artist Sukumar Bose inspired the look and color scheme of the Study. Gifts received by various presidents adorn the Study. The Study opens into the morning room. The President meets dignitaries here. We started with the carpets. We decided that the carpets would tell us the color schemes, or the carpets would tell us how to work upwards. Each room in the Rashtrapati Bhavan stands witness to history. To restore these to their former glory, the restoration team had to rearrange available resources in view of the heritage nature of the rooms. We found furniture, carpet, art from the Lutyens and the subsequent eras. We restored them. We placed them according to the functional requirements and created a new ambience everywhere. A lot of the furniture was, the sets were, just scattered randomly all over not only the Rashtrapati Bhavan, but all over the President's estate. So it took a while for us to bring these pieces back, then put them in families, and slowly we started discovering that, oh, this table is a brother of that one in that room. Let's get them together. Oh, these chairs belong to that family. This coffee table. So we started reuniting the families. Each room had to be decorated, given a character, and then the setting frozen. No chair could be moved once it was set. Work was undertaken in each room to revive its distinct character, just like the way they were originally meant to be. Fascinating works of art by reputed Indian and European artists were restored to add character to the walls. We made a positive effort to put in place an e-management system of all the art objects, furniture, furnishings in the building.
Darbar Hall is where the first government of independent India was sworn in. Lutyens designed new viceregal thrones for the Darbar Hall to replace those from Government House in Calcutta. With new flags, paintings and a warm look, Darbar Hall has regained its past grandeur and is now used for hosting civil and defence investiture ceremonies and for conferment of other national and international awards. Next to Darbar Hall is the library. It is also described as the daughter of Darbar Hall. Besides priceless publications from the 19th century onwards, it also has more than 2,000 rare books. They are now being digitized and preserved for posterity. We've restored about 150 very valuable volumes. We scanned about 12,000 volumes, and of these 8,500 are now available in digital format. We had about 8 lakh photographs. We have already completed the job with about 7.5 lakh prints. Another 50,000 we hope to complete in another 6 months' time. Ashoka Hall was originally built as a state ballroom. It is now the venue for accepting credentials of foreign envoys and other formal functions. Embellishments on the ceilings, carpets and chandeliers reveal the stately splendor of the room. We are also putting RFIDs on these furniture items so that if they are moved from one place to another, we get a signal where it has gone and it can be quickly brought back. Rashtrapati Bhavan, declared a Grade 1 heritage structure in 2009, is an iconic living heritage. It requires meticulous attention to detail in every aspect of its conservation and restoration. The comprehensive conservation management plan drawn up by INTAC focuses on these areas and lays down the blueprint for future interventions in the President's estate. We went into all the detailed drawings, the fine details that went into the building. We studied that and tried to restore using the same material. The presidential retreats spread across India are also going through an era of renovations to return them to their original magnificence. While the Rashtrapati Nilayam at Hyderabad had a greenhouse constructed and drainage system repaired, the retreat at Mashobra, Shimla was refurnished completely. At the President's estate, the grand bungalow called MTC-1 that used to house the Viceroy's private secretary was part of the original design of Lutyens. This building is one of the best designed houses by Lutyens himself. The bungalow had lost its character due to years of neglect and misuse and was even ordered to be demolished. The President was extremely keen that this building should be restored. The new restoration drive painstakingly brought it back to life, returning its heritage charm in great detail.
winds of change are blowing rather strongly here at the President's estate. Access to the Bhavan was simplified. The first direction that the President gave us was that this Rashtrapati Bhavan belongs to the people and it should be opened and given easy access to the people. Visitors can now book online using a high-tech interface and visit Rashtrapati Bhavan 3 days in a week. Soon, museums at the President's estate will remain open throughout the week. We have democratized the access of the Rashtrapati Bhavan using the e-visitor management system. For many events at the President's estate, guests are now invited through digital invitations. Which is a barcode embedded security invitation systems. Again, this system has helped us in creating efficient delivery of the invitation running into thousands in numbers. Now, every asset in the Bhavan is accounted for. A high-tech assets documentation and inventory management system driven by the latest software ensures that. This includes the entire wealth of gifts received by the President. Each one is meticulously RFID coded. We have records at 4 to 5 places. We are reasonably sure that this will continue. No stone is left unturned to reach out to the people. In view of the changing times, the President now maintains an active online presence through digital media. A convenient e-presidential message system or e-PMS, an e-presidential function system or e-PFS, is effectively managing requests for messages and functions. The e-way system is dedicated towards maintaining effective communication between Rashtrapati Bhavan and the various Raj Bhavans across the nation. The new age President's estate is gearing up to present itself as a prime tourist attraction with 3 distinct tourist circuits: the main building, gardens, and museums. Tourists can use these battery-operated ferries to move between the locations. They could visit the new museums, designed to suit the tastes of every visitor. This heritage building used to house the stables of the President's bodyguard. It was found decaying due to lack of use. The restoration team took this opportunity to change it to a storytelling museum, detailing salient aspects of Rashtrapati Bhavan's history and independent India's march forward. Another extensive museum is ready to inspire its visitors. This will be a state-of-the-art museum, about 10,000 square meters. We have architectural limitation. These buildings cannot be more than 2 stories. So to build this particular museum, we had to go down 2 stories. So this will be the first sunken museum, which will be dedicated to the nation by the Prime Minister on 25th July 2016. We encapsulate India's rich tradition starting from 1947. How our democracy has evolved, how the institution of Rashtrapati Bhavan has evolved, what has been the contribution of the various presidents. That's going to be a lasting legacy, the museum, because it's going to stand much, much after all of us are nowhere on the scenario. Visitors can also take home a piece of the Bhavan's heritage through specially designed and crafted merchandise from the new souvenir shop. Navachara Kaksh, the new Science and Innovation Museum, is already busy inspiring and igniting young minds. This museum of inspiring innovations, with its compelling mix of scientific know-how and models, is a hot favorite among visitors and students.
The President's keen interest in education has led to several pioneering initiatives in higher education, such as hosting of annual conferences with Vice-Chancellors of central universities and directors of IITs and NITs. These have now been merged into a single 3-day visitors conference to create synergy amongst all central institutions of higher learning. Programs like innovation exhibitions are being held regularly. The President also greeted all the heads of state and government of Pacific Island countries and received the dignitaries attending the India-Africa Forum Summit. On the eve of Teachers' Day, the President took up the role of a teacher at the government school within the estate by taking a class on democracy and political history. The estate also arranges for several in-residence programs, inviting artists, writers, inspired teachers and students to stay and experience life at Rashtrapati Bhavan. This is not just an officious sort of colonial building, but a normal model city, which probably everyone should adapt in their own cities and regions. The Smart India concept, the Smart Rashtrapati Bhavan concept, they gave me the feel that how I can implement the things, how they are governing the whole Rashtrapati Bhavan through the software, so through the application. A new ceremonial hall, inaugurated in December 2014, played host to President Barack Obama and Michelle Obama during their state visit to India in January 2015, and stands ready to greet more visitors. We integrated it with the existing structure of our auditorium, and we completed it in almost 11 months. The President's estate is getting smarter by the day in the most modern sense of the word. Besides lessons in financial inclusion, smart classes at the senior school here prepare students for a world driven by technology. This has been a very positive result-oriented experiment to use the technology-enabled learning in this government school and a government setup. Numerous high-tech measures are adding to this smartness quotient, like these RFID-based ID cards for the residents. The entire township is now Wi-Fi enabled. The estate has developed and put to use a smart option to solve everyday civic problems. Residents use a mobile app called Monitor to report irregularities in real time to the concerned departments. An intelligent operations center receives these reports and helps civic agencies take immediate remedial measures, improving their efficiency of services. To save electricity, CFL bulbs have been replaced with LED. Solar panels are being installed to generate 1.3 megawatt of clean power. Household solid waste now gets segregated at the source and gets managed professionally. The estate is fast moving towards being a zero-waste township. Residents have been provided with eco-friendly yellow bicycles to move within the estate. The residents of the President's estate now have a full-fledged shopping complex. Serviced apartments for their guests. In a locality called the G Point, close to the Bhavan, a twin-tower residential complex is getting ready to house more employees. A smart township is also a healthy township. With this object in mind, the President's Estate Clinic, dating back to 1929, has been renovated and restored to its original shape. A rundown rotary building has been converted into the Ayush Wellness Clinic.
It brings together under one roof the best practices of India's alternative medicine systems and offers them selectively to patients. We have also at IUC started giving a skill training to people from the state so that not only they can benefit through the knowledge, but also they can earn livelihood. The residents also have an ultra-modern health club to stay fit and healthy. Sports Plus initiative is another powerful initiative started under the direction of the Honorable President. Under this initiative, the Honorable President has adopted 15 children in the 3 different streams of the sports, where all the training facilities, their dietary requirement, their sports kits have been provided from the President's Secretariat. The President's Polo Cup has also been revived after many years with fantastic response. Almost 60% of the President's estate, that is more than 190 acres, is green, comprising dense foliage and rare flora and fauna. Besides the spiritual, herbal, cactus and nakshatra gardens, it includes the sprawling Mughal gardens. The flora and fauna in the President's estate is a matter of pride for the nation. I don't think there is anywhere in the world you will have this concentration of birds. An acute shortage of water was leading to the degradation of this green cover, causing permanent loss of flora and fauna. 20 lakh litres of sewage from the President's estate and adjoining areas is now being treated every day at this sewage treatment plant. Inaugurated in June 2015, this plant was completed in a record time of 15 months in technical consultation with IIT Delhi. The treated water gets collected at the Dali Khana Lake that holds 50 lakh litres of water. This water is used to preserve the ecosystem of the historic and exotic gardens of this estate. A tree shredder machine has been procured to make use of the large amount of biological waste generated from the gardens. They are turned into environment-friendly manure. The estate also promotes water conservation through intelligent sprinkler irrigation. A large number of animals also call the President's estate their home. The estate is committed to the welfare of all animals within its premises, including stray dogs. A dog shelter has been set up to provide them with appropriate veterinary treatments and proper food at one place. We had to be heritage property with a high-tech orientation and a caring society. A caring society cares for its workers across all categories. Under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 1,500 contractual and regular employees of the estate are being trained, assessed and certified in 19 skill categories. These 5-day courses, designed and implemented with the help of the National Skill Development Corporation, help these workers enter the formal job market with enhanced confidence. We have every staff working in Rashtrapati Bhavan fully trained and certified. While the 1,700 diligent workers of the Bhavan strive hard to maintain the grand edifice of the Rashtrapati Bhavan, Sanskar, a play school, takes care of their young ones and grooms them for their life ahead. It's a nursery school where we have about 120 children who come in from within Rashtrapati Bhavan. We started a midday meal scheme for them. The idea was to provide them nutritious food. This was to ensure that the kids flower and they attain the potentialities that they have. We have about 17 differently abled children in the President's estate.
Harsh is a respite care center for special children launched in 2014. Thanks to this intervention, many differently abled children of the estate are showing remarkable improvement in learning and cognitive abilities. The initiative towards senior citizens is called Samagam, which is a confluence, people coming together. Every senior citizen of the President's estate looks forward to this confluence. It's a time for yoga, to play, to interact, and just have fun. A rundown building has been repaired and developed into the Pranab Mukherjee Public Library. Besides reading books, classes for yoga and classical dance are regular features here. We called it 3H Township. These 3 H's were given by the President. On 19th May this year, when we declared Rashtrapati Bhavan to be a smart township, he added one more H. And he said from now onwards, it will be a 4H township. And that H is happiness. So now we are what we call a humane, heritage, high-tech, and happy township. The President's estate is confident and committed to extend its smart township measures beyond the premises of the Bhavan. An efficient model of functioning has emerged that could be replicated and adapted to build smart villages. With this in mind, the estate has adopted 5 villages from Haryana to transform them into model villages. President thought that it just might be a worthwhile idea for us to convert a village into a smart model village. So we are going to launch this project in 5 villages of Haryana on 2nd July. The estate is resonating with the sound of music, representing the richness and diversity of India's art and culture. Each one of them, whether it is in the sphere of music, whether it is in the sphere of dance, whether it is theatre, has left an indelible impression on India's rich cultural heritage. Under an umbrella initiative named Indradhanush, once every month, doyens of India's performing arts regale the audience. Indradhanush was also the first in the series of books comprising a multi-volume documentation project. These volumes are going to cover various facets of Rashtrapati Bhavan. Through these new books, numerous heritage aspects of the estate are being preserved for the future generations. From an authoritative account of the marvelous journey of an elite unit of the Indian Army to a fond trip down memory lane with various visiting heads of state, from a book on the nationwide retreats of the President to multiple volumes recounting the speeches of the President. These books are a rare treasure trove of untold stories. An exciting coffee table book presents an inclusive pictorial account of all the 111 species of birds that inhabit or visit the estate. The birds don't pose for you. They don't make themselves available when you want to photograph them. It's a tough task, but an enjoyable task. It was a deadline set by the Honorable President. It had to be accomplished, and we accomplished it. These meticulously restored clock towers represent the changing times at the Rashtrapati Bhavan. Drawing strength from its heritage, life is on the move here towards a better and brighter future. Our team of officers has achieved a great deal, but there's lots more to be done. You can never say that the last bit has been done.
So it will be an ongoing process. After an energetic stage of growth and revival, the estate is now ready to march forward as a metaphor for modern Indian democracy. Vibrant, energetic, happening, and on the move. राष्ट्रपति भवन जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि बहुत विशाल भी, और अक्सर इसे बाहर से देखकर अंदाजा नहीं होता कि ये इतना विशाल भवन और इतना समृद्ध, और यहाँ पूर्व में कई महान विभूतियों ने इसके मान में, इसके सम्मान में श्री वृद्धि की है। बारिश के बाद बिल्कुल धुला हुआ राष्ट्रपति भवन और उसका ये प्रांगण समारोह की आगे की गतिविधियां। So here we are at the forecourt of Rashtrapati Bhavan once again, and what you're seeing is the arrival of VIPs, dignitaries, special invitees who are now going to come in to be a witness to the Inter-Services Guard of Honor to the President at Rashtrapati Bhavan. So we have seen over the past 20 minutes or so the Home Secretary, Defense Secretary, 3 service chiefs, Marshal of Indian Air Force, the Cabinet Secretary, the Raksha Rajya Mantri. So all of them have been slowly coming to the venue. There was a really heavy downpour, Sanjeev, and what has happened very beautifully right now is that the rain seems to have stopped, and I think the sky is clearing up a little, mild sunshine coming through. बिल्कुल गौरव, और तीनों सेनाध्यक्ष इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ राष्ट्रपति भवन एक एक करके यहाँ गण्यमान्य व्यक्तियों का आना जारी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, So as and when the guests arrive, which will also include family members and guests of the President and former President, the Chief Justice of India, the Speaker Lok Sabha, we just saw that Srimati Pratibha Devi Singh Patil, the former President, Dr. Devi Singh Shekhawat was the Prime Minister, the Vice President, and Srimati Salma Ansari. So they will all come here, and once the gathering is complete, then the President will arrive here for the national salute. The Guard Commander will report to the President and will then request the President to inspect the Guard of Honor. And once that is done, the President will be conducted to the state coach, prepositioned at the southern end of the forecourt. And then this state coach will be delivered to the North Court via the South Court and West Subway. We'd also like to share with you that the President, once he's conducted to the study post the salute, the dignitaries will all remain in the forecourt, Rashtrapati Bhavan, for the Inter-Services Guard of Honor to the ex-President of India, Shri Pranab Mukherjee.
वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली और भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस खेर। Sanjeev Shri Arun Jaitley is echoing the colors of the clouds today. Lovely stormy grey. आज के पूरे समारोह की विशेषता और विशिष्टता ये रही कि जब यहां से काफिला चला था तब आसमान में कभी बादल कभी धूप इस तरह का दृश्य था, और अब उसके बाद बारिश के बाद धुला हुआ वातावरण। So it's really interesting to see the wide diversity of people that are here today. Friends, family members, well-wishers, and well, this is the iron filigree gate which periodically our camera people frame the complete forecourt and show it to you. Lovely shot that is. And any angle that you take of this beautiful structure, whichever position you take it from, there is depth in it. Our national flag picking up in the light breeze, waving gently. शान से लहराता हमारा तिरंगा आज उसके लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण अवसर। देश के नए राष्ट्रपति ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है। आज इस मुख्य द्वार को भी हमने खुलते देखा, जो महत्वपूर्ण अवसरों पर ही खोला जाता है। बहुत खूबसूरत राष्ट्रपति भवन, और इसके फव्वारों के दृश्य देखते हुए ये भी लग रहा था कि फव्वारे यहाँ जमीन पर और अभी थोड़ी देर पहले जैसे आसमान से भी इसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा था। Right, and I think somewhere, Sanjeev, the skies are also collaborating, since we talk of collaboration and consensus building in the country. जमीन से आकाश तक दृश्य लगभग एक सा खूबसूरत नज़ारा, और जैसा हम सब जानते हैं ये वर्ष का वो मौसम होता है जब हरियाली और अधिक अपनी शोभा बिखेरती है, और आज के इस खास मौके पर ये दृश्य और भी अधिक सुंदर होते हुए। Really the centerpiece of this whole vision is the forecourt. भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और भारत के नए राष्ट्रपति श्री कोविंद कानून के और संविधान के जानकार हैं। उन्होंने कई वर्ष वकालत की है, प्रैक्टिस की है उन्होंने। उन्हें कानून और संविधान की गहरी समझ है।
So when we also talk of the role of the president, and here we see shots of family members, and I'm sure President Kovind's family is also present here in the audience. It's truly a very, very proud moment for each and every one of them to know that just being ordinary, just being simple is the most powerful thing in a democracy. And today we live up to that promise that our Constitution gave each and every citizen when we decided to be a republic. And also, as the head of that republic, the constitutional head, the president, our Constitution clearly states in Article 52 that there shall be a President of India, and explains in the next article the role and position, saying the executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him. राष्ट्रपति कोविंद की पत्नी श्रीमती सविता As Mrs. Kovind leaves the study, the limousine will now arrive at the forecourt. Prime Minister Narendra Modi arriving at the venue, greeting the people, and it is a proud moment for him too today, and an auspicious one, of course. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन तीनों सेनाध्यक्षों से मिलते हुए कृष्ण आडवाणी और उसके बाद देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा जी पूर्व राष्ट्रपति, Shri Kovind, as we mentioned earlier, is of course the first BJP member to be elected as president. लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, loved, respected and valued across party lines by one and all, Shri Kovind.